Hello, good morning. So hopefully all of you have settled down. Now in the last class, we were talking about India-Bangladesh relations. कुछ पढ़ा आपने बांग्लादेश के बारे में? So if you look at the material, you don't look at the material as being outdated, but you look at the material as being static, है ना? तो that is basically what has happened. वो आपको वहाँ मिल जाएगा. उसके अलावा बाकी चीजें are added in accordance with what is happening in the current circumstances. So, anything that you read about Bangladesh? कुछ पढ़ा आपने बांग्लादेश के बारे में? In the newspaper? Bangladesh offered a port to India for India's extended use. To reach the northeast. Which port are we talking about? नाम याद नहीं आ रहा है. दो ही पोर्ट हो सकते हैं, या तो चट्टोग्राम या फिर मोंगला. हाँ? And then there is Ashuganj port, which is a riverine port on the Meghna river. चलिए बढ़िया आप लोग पढ़ रहे हैं. Second thing is, over the last 2-3 years, the performance, economic performance of Bangladesh was something on which people had written in the newspapers. For example, C. Raja Mohan had written in the newspaper. So the larger opinion is that over the years, Bangladesh has made significant economic progress. On social indices, Bangladesh's performance has been better as compared to many of the South Asian countries, including India. For example, last year, Bangladesh's per capita income had crossed that of India. So there was also a comparison that there is one country, Pakistan, and there is another country, Bangladesh. Bangladesh, with political stability and sound policies, has been able to make significant economic strides. ये पिछली कहानी थी, लास्ट ईयर तक की कहानी थी. तो इसको भी कहना गलत नहीं होगा. पर आज क्या कहानी है? What is it that you were finding in the newspaper? That Bangladesh, like Sri Lanka, is facing economic problems. Why has that happened? So उसके लिए फिर अगर कुछ भी पढ़ोगे तो 2-3 explanations मिलते हैं. Why is that happening? One, people are saying that Bangladesh government had ignored the economic realities. Right? They were making claims of success, but they had ignored the economic realities. So one immediate reason for Bangladesh's economic difficulty is very obvious to understand: rising fuel prices globally. So Bangladesh, like India, like Sri Lanka, like many of the other countries, is dependent on import of fuel. अपना तो कुछ पैदा करते नहीं बहुत ज्यादा, तो import of fuel, and import of fuel is something that requires large dollar exchanges, large dollar reserves, because you are paying for your oil and gas imports in dollars. So Bangladesh's dollar reserves have dwindled. Some people are saying that, government claims that there is around 41 billion US dollars of dollar reserves, but the actual dollar reserves are around 7 billion US dollars. So that means Bangladesh soon may face a balance of payment crisis. It would not be able to pay for its imports. Now, that's why you would see what is happening is Bangladesh has cut down on the import of fuel. So that is first indicator of economic problems being faced by Bangladesh. Bangladesh produces only 30% of its chemicals and fertilizers, and it's an agrarian economy. So now its fertilizer plants are facing fuel crisis. So that is another indicator. And then people are saying that Bangladesh, there are two most important elements of income in Bangladesh as an economy. One is exports. So Bangladesh generally is known for export of apparels, all right, ready-made knitted yarn clothes. So this year, since there is already Ukraine crisis going on, which has put pressure on the global economy, so there is not as much demand in the European market or in the American market. So first revenue earner for Bangladesh, which is export of ready-made garment, is facing a setback. And second, people are saying that Bangladesh had in the past promoted exports by offering cheap dollar loans to its exporters. Export Development Fund, as it was called. So that has also seen a lot of default. So that is now
coming up as an economic crisis for Bangladesh, right? So Bangladesh may also seek an IMF loan. So generally economically कोई बढ़िया नहीं कर रहा, हम भी कोई बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं कर रहे. Hopefully the numbers are good, because if numbers are not good, then we would get to know about the crisis quite late. Alright, so that is basically what is making news. So last year क्या कहानी थी? एकदम opposite कहानी थी. If you do a simple Google search, last year or last to last year, the Google search would give you articles about economic performance of Bangladesh, economic success of Bangladesh. तो वो कहानी गलत नहीं हो गई, but ये है कि current realities are now throwing up some other picture that Bangladesh also may be in economic crisis. अभी और बहुत सारे देश आते जाएंगे इसमें, because that is how the global economy is shaping up. So that is something that I would urge you to keep an eye on, to keep reading. Why? Because एक छोटा सा point add हो जाएगा आपके उसमें. Now in the last class what we were talking about was water issues between India and Bangladesh. So we said that when we are talking about such an issue, there is a lot that you can read, but simply the kind of facts that you would require are India and Bangladesh share how many transboundary rivers? 55 transboundary rivers. Which is the major one? We said GBM basin, Ganga, Brahmaputra, Meghna basin, which is the world's second largest hydrological region in terms of flow of fresh water, right? Now we said that we understand that it is a commonly shared resource, which on the one hand, if there is adequate cooperation, both sides can benefit. But on the other hand, we also know that this commonly shared resource is also a source of contention. So we basically told ourselves a story that when India and Bangladesh started their relations 50 years ago, they realized that river waters would be a problem. Why? Because before 1971, the focus was on rivers shared with Western Pakistan. So Eastern region rivers were largely ignored. There were no major agreements on them in the era of Pakistan. So after Bangladesh became independent, India and Bangladesh initially recognized that this could be a problem and then set up certain institutional mechanisms as they are called. So what did they set up? The Joint Rivers Commission. This was a bureaucratic technical body which had to conduct surveys and take up questions related with the sharing of river waters. So this was a technical and bureaucratic body that was created by both sides. Now we understand that there is a willingness, whenever there is warmth in relations, politically relations are good, there is a willingness to resolve issues. So the approach is solution oriented. But we soon understood that after 1975, when there were frictions in relations, we see that river waters start emerging as an issue of friction. What is the first friction that emerges? On the issue of Farakka barrage. Bangladesh objected to diversion of waters. So for a brief period, this contention, Bangladesh sought to internationalize it, but ultimately first agreement that India and Bangladesh sign is, कौन सा पहला agreement India and Bangladesh ने sign किया river waters पे? The Farakka agreement, 1977. Farakka agreement is something that we signed. And then later on the same river, on the Ganges, we signed a rather comprehensive treaty called the Ganges Water Treaty in the year 1996. So that is basically about sharing of water in the lean season, in the non-monsoon season, right? Share of water has been determined for both sides. So generally we say that this is a 30-year treaty, and by and large it has been functioning satisfactorily, though from time to time there are questions, but we understand that by 2026 this treaty would come up for renewal or renegotiation. So that is one issue, इसको हम किनारे रख देते हैं, क्योंकि there is already another issue which is more important, which is the issue of Teesta. All right, so what are the main problems pertaining to Teesta in this relationship? First of all, the issue is about sharing of water share, right? That's very clear. In this context, the existing arrangement dates back to 1983, interim arrangement. Now, Bangladesh is not satisfied with this interim arrangement and it demands 50% of water. So that is one problem, that there are common claims and counterclaims on the waters of Teesta, ऐसा हमको पता है. Now, what has happened in reality in the basin is that while water demand has gone up,
we basically attribute the rise in water demand to rise in human population and human activities, industrialization, urbanization, demographic changes. So that has meant that water demand has gone up, but water availability has become variable or unpredictable, right? That is primarily owing to climatic factors. So that is the main reason. No matter what you do, what kind of agreement you have, you are not going to improve the availability of water, because that is something that is dependent on the nature. So then we realize that this is the second level of problem: water demand and water availability in the basin. So thereby we see that this issue is considered to be a difficult issue to resolve because of similar demands. You can also add another point of contention here from Bangladesh's perspective. India has planned multiple hydro power plants. अभी हम तीस्ता पे ही थे ना, एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए. India has, though we had moved towards solution, I remember, but एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं कि और क्या ऑब्जेक्शन है बांग्लादेश को. India has planned several hydropower projects on Teesta, right? Because Teesta emerges from Himalayas and then in a short span of time and distance comes to the plains. So the initial reaches of Teesta are conducive for the development of hydropower plants. So India has planned multiple hydropower plants in the upper reaches of Teesta, and Bangladesh has expressed concerns. About the impact of these projects, on its interests. All right, so basically that is something that Bangladesh has done. This is something that we know. Now, then we move towards solution of this problem. So what had we said? We had mentioned 2 points in the last class. जब class खत्म हुई उससे पहले 2 points हमने लिखे थे. What are the 2 points of solution? First of all, we are saying, that's a simple way of saying what has already happened. वहां से solution ढूंढना चाहिए. So we are saying that till a final solution is found, the interim agreement of 1983 must be implemented scrupulously. All right. And then secondly, we said 2011 draft agreement. जो हमने कहा था कि भाई ultimately negotiations continued by 2011. A draft was prepared, a treaty had to be signed, but ultimately the treaty was not signed, and primary reason was the objection of West Bengal government. So West Bengal government said that Bangladesh already receives its share of water from earlier treaties, and the larger catchment area of Teesta is well within India, meaning within West Bengal. So that is why treaty was not signed. So we are saying as a solution that 2011 draft agreement can provide a solution, but what is the requirement? There is lack of political contention, political consensus, not contention, consensus. So we say that, ultimately, eventually, if all the players come on board, it would be a stable solution. So there is a need for developing a political consensus on the issue. Thirdly, जैसा कि हमने कहा है कि प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन बना लेना चाहिए. तो व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द सॉल्यूशन? क्या कर सकते हैं हम सॉल्यूशन के लिए, और क्या कर सकते हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द तीस्ता इशू एंड वी आर ट्राइंग टू रिजॉल्व इट. वी हैड ऑल्सो मेड अ क्वेश्चन आउट ऑफ इट. सो थर्डली वी कैन से, so either you can look at the approach of West Bengal government as part of the problem, or you can find solutions therein. So West Bengal government has suggested, what has West Bengal government suggested? West Bengal government has suggested exploring the possibility of what? Possibility of sharing of the waters
sharing of the waters from rivers close to the Bangladesh borders. And what are these rivers? हाँ, जिन्होंने पढ़ा है कंटेंट उनको पता होगा. एग्जाम्पल, there are some rivers like Torsa or rivers like Mansai. These are some of the rivers which have been suggested by the West Bengal government ki in terms of its catchment area it is closer to border rather than Teesta, which is coming from Sikkim and then North Bengal. So closer to borders there are some smaller rivers like Torsa, Mansai. Sharing of their water must be explored. A committee should be formed to explore the possibility of sharing of waters of these kinds of rivers rather than talking about Teesta. So this can also add to the solution. ऐसा कह सकते हैं हम. इसके अलावा now you try and diversify your solutions. So are there any engineering or technical solutions? Is there a problem in the voice for online students? कुछ चैट में लिख के बच्चे भेज रहे हैं. खैर, सो आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना पीछे आवाज की? ओके, सो बेसिकली वी आर सेइंग दैट step by step solutions. So link your problems with the solution and then ultimately diversify your solutions. So is there a technical or engineering solution available? If you have read the material, you would have an idea. Generally, it has been suggested, those who are writing about it, that what we need to do is we need to develop such structures which store water or collect water in the season of abundance, in the rainy season, and make it available in the basin in the dry or lean season. So engineering solutions, right? Engineering or technical solutions like storage of rainwater to be made available in the lean season, to be made available in the lean season. Meaning in this region what we would see is either there is deluge or there is drought. All right. So when we are blessed with rains, abundant rains, जैसा कि अभी इस सीजन में हो रहा है, दिल्ली को छोड़ के बाकी सारी जगह पे बारिश हो रही है. So in those times there is a possibility that you can create large ponds, all right, or check dams to store water in the basin, not in the main stream but in the larger basin. And then when that water is needed, it can be made available in the lean season. So basically water availability को बढ़ाने का एक solution है ये, that rather than allowing the water to flow to the sea, create structures to store water. That is the engineering solution that people suggest. That अपना दिमाग लगाइए और engineering solution से water availability बढ़ाइए. इसके अलावा और क्या solution हो सकता है? इसके अलावा solution हो सकता है water demand को address करते हुए. How do you address water demand? So basically India is an agrarian economy, Bangladesh is an agrarian economy. India has significant achievements in terms of agricultural research. अभी यहाँ पे पास में ही क्या है? The Pusa Institute. So basically the idea is, अगर आप इंडिया के अंदर भी देखो तो हम पिछले कुछ सालों में कुछ बातें करते रहे. क्या बातें करते रहे? To increase water use efficiency. We are saying more crop per drop. सुना है आपने? Per drop more crop. So basically that is about water use efficiency. People are saying that there are some problems which cannot be resolved by treaty alone. For example, people are saying that those activities which require larger amount of water must be discouraged in these kind of reasons. So one part of the solution is to diversify or to change, in other words, change cropping patterns. Change cropping pattern away from
water intensive crops like paddy and jute. राइस नहीं उगाते आप, पैडी उगाते हैं. राइस तो बाद में बनता है ना. सो लाइक पैडी एंड जूट. सो जहां पे पहले से ही प्रॉब्लम है पानी की लड़ाई है या पानी का डिमांड बढ़ने वाला है, वहां पे हम कोशिश करें कि वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स को प्रमोट करने की बजाय ऐसे क्रॉप्स को प्रमोट करें जिनमें पानी की जरूरत कम है. सो बेसिकली डाइवर्सिफिकेशन ऑफ और चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न अवे फ्रॉम वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स लाइक paddy and jute. That is one solution. Another solution related to it is promoting efficient means of irrigation. Example, drip irrigation, है ना. तो बेसिकली अदर आइडिया इज दैट मेक इरिगेशन इफिशिएंट, प्रमोट टेक्नोलॉजी, सब्सिडाइज करें या कुछ भी करें, प्रमोट टेक्नोलॉजी सो दैट अगेन वाटर डिमांड एंड वाटर यूज कैन बी बैलेंस्ड in the basin. So technological solution. So basically what I am suggesting to you is, after you have mentioned general points, if you have some expertise from law or from science and technology or from engineering, you can think of those solutions. अपने background को भी लेके आ सकते हैं. But since it is general studies, we try and keep it at the level where a large section of audience can understand it. है ना. इसमें बहुत ज्यादा, अगर आप बहुत ज्यादा इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में या लॉ की लैंग्वेज में लिखने लगेंगे तो एक तो टाइम ज्यादा लगेगा, दूसरा रिटर्न और इन्वेस्टमेंट वाली बात नहीं है. बट डाइवर्सिफाई योर पॉइंट्स एंड देन ट्राई एंड लिंक योर प्रॉब्लम्स विद द सॉल्यूशंस. व्हेन यू आर गोइंग टुवर्ड्स क्रिएटिविटी, थिंक ऑफ फिजिबल सॉल्यूशंस. इसीलिए पढ़ना जरूरी है. कहीं भी अखबार में पढ़ोगे इसी तरह के पॉइंट्स मिलेंगे कि ये करना चाहिए हमको. राइट, दिस इज व्हाट वी शुड बी डूइंग. So basically this is the whole package of solution. What should be done? Political, diplomatic level, already the solutions are existing, so implement them or create political consensus on them, right? And then there are certain factors which may add to this solution. So that is, one is increase availability of water, create such engineering structures, right? Check dams or large pondage system ऐसा आप क्रिएट करें ताकि पानी स्टोर करें और फिर लीन समय में अवेलेबल करा दें. उसके बाद क्या सॉल्यूशन है? एड्रेस वाटर डिमांड, एड्रेस वाटर यूज. सो बेसिकली मूव अवे फ्रॉम, इंसेंटिवाइज द फार्मर्स टू मूव अवे फ्रॉम वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स एंड प्रमोट इफिशिएंट irrigation in the basin. So ultimately what would happen is that you would be able to find a stable solution. Otherwise आज पानी की जरूरत है, उस पर ट्रीटी कर ली, फिर कल पॉपुलेशन बढ़ गया, वाटर डिमांड बढ़ गया, फिर कल पानी की शॉर्टेज आ गई, फिर से विवाद होगा. सेवेंथ, what can be the other solution? So we sometimes think of bringing people into solution, है ना. अल्टीमेटली जैसा मैंने पहले भी कहा था कि मैं इसमें क्वेश्चन देख रहा था, मैं भूल गया मैं क्या कहने वाला था. यहाँ पे एक बड़ा सा क्वेश्चन आया हुआ है, उस पर भी हम एड्रेस करेंगे. So what I was saying, I was saying that make people the part of the solution. In the context of the river, I said that तीस्ता का पानी किसको चाहिए? Why? Where exactly would you feel the issue of तीस्ता more acutely? अभी तो आप यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, प्रिपरेशन के लेवल पे एक्सपर्ट बन गए तीस्ता के, और भी थोड़ा पढ़ेंगे एक्सपर्ट बन जाएंगे. बट अल्टीमेटली दिस इशू हैज टू बी रिजॉल्व फॉर द पीपल ऑफ द बेसिन, पीपल हु आर डिपेंडेंट ऑन दैट वाटर. तो उनका क्या? All right, can we make them a part of the solution? When you become bureaucrats, तो क्या आप अपनी कुर्सी पे बैठ के अपने कि मेरी इतनी रैंक आई थी, मैं I am entitled to take decisions. That is how you would administer. You would have to ultimately listen to the people, right? So how do we include people in this solution, right? So basically promoting understanding through interaction
across the border, interactions across the border between the people of the Teesta basin, people of the Teesta basin. So basically, this is a solution which is about making them understand that ultimately people in India also have valid reasons to be concerned about the sharing of water, and people in India to understand that people in Bangladesh also have valid concerns. Ultimately, the farmer, the fisherman, they should understand that it is not about intent, it is about the nature of the river and the availability of water. And on both sides, there are valid demands. There are valid reasons why river water is such a sensitive issue. So some NGOs have been doing it. Right, so that's why we have included this as a solution. Some NGOs organize village visits. All right, they organize visit for villagers from both sides. Right, those living on the banks of Teesta in Bangladesh, those living on the banks of Teesta in India. So generally, in small groups, the villagers are allowed to interact with their counterparts from across the border, so that a larger understanding can be developed. You cannot resolve any important issue without creating a larger support for it. Delhi में आप treaty sign कर सकते हैं, कोलकाता में आप protest कर सकते हैं, but ultimately you have to solve the problem through the help of the people. All right, so this is basically a range of solution that you can present in the context of any question on Teesta in the examination. Mohan Sharma, how these solutions seek to resolution to international issues of Teesta? Is it in like India harnessing these solutions should give up on the issue? First of all, Mr. Sharma, what is the international issue of Teesta? The issue is very simple, that there is a shared transboundary river and India is an upper riparian and Bangladesh as a lower riparian is concerned about its water rights. How do you do it? You basically do it by instruments like agreements and treaties. There have been agreements or there have been negotiations about treaties, but they have not been satisfactory, or we have not been able to sign them. So international solution can only be by signing an agreement. What we are saying is that attempts have been made towards that agreement, but ultimately the issue has to be seen in its larger scope. So thereby we have said first 2 points: implement any agreement which is already there, so that trust is not broken in the relationship. Keep on implementing the agreement which is there. Secondly, there is already an agreement that was negotiated by both the governments. तो गवर्नमेंट हम नहीं कह सकते हम गवर्नमेंट से ज्यादा समझदार हैं. So 2011 draft agreement, so that can provide the basis. Government के level पे negotiate हुआ, that can create a basis of the solution. But the primary problem is lack of political consensus. So create political consensus so that that agreement or another negotiated agreement can be signed. There is Joint Rivers Commission. Joint Rivers Commission meets every year, meets regularly. वहाँ पे आप बात कर सकते हैं. So that is happening, but largely what would aid to the solutions? So उसके बाद बाकी points हैं. Ultimately address the issue, because we have identified 3 particular issues in this case. One is the international issue of dissatisfaction with already existing agreements, demands, claims and counterclaims. Another is the sensitivity of Bangladesh on some issues like hydropower. Another is the equal sensitivity of the West Bengal government, right? But apart from that, we also identified the 4th reason, which makes this issue complicated, which is what? The mismatch between water demand and water supply in the basin, in the larger basin. So first 2 points, 3 points of the solution are related with how political actors, diplomatic actors are engaged with the issue. Rest of the points are only suggestions that this can be done to create a wider solution. So there is no separate international issue. You have to look at the issue of Teesta as a whole. Okay, so basically there are a lot of discussions in the
chat box online. All of you are moving towards the right direction and some of you are answering each other's questions. That is also fine. All right. आपके पास कोई सवाल है ऑफलाइन? ऑनलाइन वाले तो बहुत ही एक्टिव हैं. ऑफलाइन में एक दिक्कत होती है कि आपको शर्म आती है कि मेरे कुछ कहने से कोई हंस दिया, टीचर ने मजाक उड़ा दिया तो क्या होगा. तो बेसिकली कुछ नहीं होगा. अगर मैंने मजाक ही उड़ा दिया तो क्या हो गया भाई? मैं तो आपको पॉइंट तो दे नहीं रहा हूं यूपीएससी के. मेरे कहने से ना आप बनने वाले हैं ना नहीं बनने वाले हैं, है ना. ऐसा नहीं होने वाला. सो बेसिकली इफ यू हैव वेरी प्रॉब्लम, ट्राई टू सॉल्व इट एट द सेम प्लेस. ज्यादा शर्माने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ साथ में थोड़ा सा एक डेकोरम भी मेंटेन करने की जरूरत है. सो इफ देर आर एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क. इफ यू हैव रेड द क्लास मटेरियल, इफ यू हैव फाउंड एनी डिफिकल्टी, प्लीज आस्क द क्वेश्चन. कोई सवाल है आपके पास? कोई सवाल है आपके पास? नहीं. बातचीत आपस में करोगे. आपकी बातचीत की आवाज मुझ तक भी आती है, लेकिन सवाल पूछने के टाइम पे सवाल नहीं पूछोगे. तो आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन. ट्राई एंड आंसर दिस क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द रिवर तीस्ता. 1. It is a tributary of Brahmaputra and the origin of both the rivers is same. पहला स्टेटमेंट. दूसरा स्टेटमेंट, यूपीएससी में व्हेन यू आर लुकिंग एट क्वेश्चंस, इधर देयर आर क्वेश्चंस डायरेक्टली जो आपसे ए बी सी सॉल्यूशन पूछ लेते हैं, या और देयर इज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन. रिवर रोंगित इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर तीस्ता. The Teesta River eventually enters the Bay of Bengal at India Bangladesh border. All right. So obviously, which of the above is are correct? ऐसा ही यूपीएससी पूछेगा. All right. Which of the above is are correct? हाँ, ऑप्शन भी दे दें. A1 only, B2 only, C 3 only, and D all are correct. B only काफी खुश हो रहे हैं लोग. B only बाकी लोगों को भी कर रहे हैं, मौका दिए. ऑनलाइन वाले भी कर सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन दिख रहा हो तो. 3 स्टेटमेंट्स. 1, इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र. करेक्ट या इनकरेक्ट? देखो बहुत सारे लोग इनकरेक्ट भी कहने वाले थे. But there is another information here that origin of both is same. So that is not correct. Second, river Rongit is a tributary of river Teesta. ये तो क्लास में बताया नहीं, टीचर ने पढ़ाया नहीं, मैं कैसे आंसर करूंगा? टीचर की गलती है. एग्जामिनेशन हॉल में बैठने के बाद ये सोचना, या फिर अगले ऑप्शन पे जाना. थर्ड, द तीस्ता रिवर eventually enters the Bay of Bengal at India Bangladesh border. काफी दूर चली गई नदी, वहां तक जाती नहीं है. Because it enters, Teesta enters or joins the Jamuna stream which is Brahmaputra. So basically this is a question in which you can see that elimination works perfectly. First statement is wrong, third statement is wrong. So obviously अगर ऑप्शन में, अगर आप ऑप्शन से कोरिलेट करें तो फिर एक ही प्रोबेबिलिटी बचती है, एक ही पॉसिबिलिटी बचती है. सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट.
सो व्हेन यू आर गिविंग टेस्ट ऑल्सो, है ना, कोई इंफॉर्मेशन आपको डायरेक्टली आएगी, कुछ क्वेश्चंस आप इनडायरेक्टली कर लेंगे. जब आप रिवाइज करते हैं अपना टेस्ट, व्हेन यू आर रिवाइजिंग योर टेस्ट, व्हाट यू आर डूइंग इज दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रिपरेशन, है ना. आप प्रिपेयर ही कर रहे हैं, आप इंफॉर्मेशन कंसोलिडेट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन लर्न कर रहे हैं. तो वन इज बाय रीडिंग बुक्स, अनदर बाय सॉल्विंग क्वेश्चंस. वो प्रिपरेशन के दौरान अपने टेस्ट में स्कोर नहीं देखना चाहिए कि मेरा स्कोर कितना आ रहा है. ये देखना चाहिए कि वो टेस्ट से आप कंप्लीट फायदा, मतलब पहला तो एम हो गया टेस्ट का क्या, simulated conditions of the examination, that you are writing the test. One. Another is how are you performing. Another is what are the areas of your strengths and weaknesses. So areas of strengths give you confidence, area of weaknesses you have to identify what is it that is I'm going wrong at. Am I weak in content? क्या मैंने ये नहीं पढ़ा है इसलिए गलत हो रहा है? क्या मैंने ऑप्शंस पढ़ने में जल्दी कर दी, ऑप्शन पढ़ने में गलती कर दी? तो बेसिकली व्हेन यू आर राइटिंग द टेस्ट, कीप द होलिस्टिक पर्सपेक्टिव इन माइंड रादर देन ओनली कैलकुलेटिंग योर सोर्स कोर्स. मेरे बगल वाले का 100 आया, मेरा 101 आया, आई एम द टॉपर, या मेरा कम स्कोर आ रहा है. दैट इज नॉट द पर्पस. इफ यू कंसिस्टेंटली आर राइटिंग द टेस्ट, इट मीन्स दैट यू आर कवरिंग लार्ज ग्राउंड. 100 सवाल अगर बार बार सॉल्व कर रहे हैं, उसका मतलब है कि आप अपने आप काफी ग्राउंड कवर कर रहे हैं. सो बेसिकली ऑफ कोर्स रिवर रोंगित इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर तीस्ता. मैंने बताया नहीं था क्लास में, लेकिन आपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके सीख लिया. अब घर जाके थोड़ा रिवर रोंगित देख लेना, है ना. सो अगेन a river originating in सिक्किम एंड देन इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ तीस्ता. तो ये इस तरह के सवाल यूपीएससी पूछता है. यूपीएससी हैड आस्क्ड a similar question in the year 2017. UPSC. So generally, if you want to be aware of the nature of questions, about the nature of questions that UPSC asks. So this is basically the issue of water between India and Bangladesh, right? Majorly, there are a lot of issues, but one issue which is consistently considered to be question worthy is the issue of तीस्ता वाटर्स. अब ये मत सोचना कि मैं तीस्ता का मैप बना दूं वहां पे एग्जाम में, ये जरूरी नहीं है. इफ यू कैन डू इट परफेक्टली, अच्छे तरीके से कर सकते हैं. ज्योग्राफी ऑप्शनल जैसे कुछ लोगों का होता है, ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले मैप बनाने में अच्छे होते हैं, तो बनाने दो उनको, आप कहीं और एडवांटेज ले लेना. लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप जबरदस्ती अपने पे प्रेशर डालो कि मुझे हर चीज में मैप बनाना है, मुझे हर चीज में कार्टोग्राफर बन जाना है. कई बार मैप बनाने का उल्टा असर भी हो सकता है ना, क्योंकि आप सभी एक्सपर्ट तो होते नहीं मैप बनाने के. सो दैट इज ऑल्सो आपके अपने कंसिडरेशन में ये जानना जरूरी है. व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स रादर देन कॉपीइंग, इस टॉपर ने ये कहा था मैं यही करूंगा. लुक एट डिफरेंट टॉपर्स, दे से डिफरेंट थिंग्स. सो आपकी स्ट्रेंथ क्या है वो सोचो, बट अल्टीमेटली there are certain generalities which have to be followed. For example, link your problems with your solutions. Try to diversify your solutions as much as possible. Don't forget the general points for special points कि मैं ऐसा कुछ स्पेशल लिख दूंगा जो किसी को नहीं पता होगा और एग्जामिनर मुझे बहुत नंबर दे देगा. नहीं, don't miss out on the general points, right? First the general points that everybody would be writing, everybody should write, and then अगर कुछ आपके पास ब्रह्मास्त्र है, कोई सीक्रेट वेपन है, कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, देन यूज इट. दैट इज द पर्पस. नाउ फ्रॉम वाटर, वेयर एग्जैक्टली वर वी सपोज टू गो? तीसरा इशू क्या आइडेंटिफाई किया था इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस में? हाँ, इकोनॉमी, राइट. सो इकोनॉमिक एंगेजमेंट्स बिटवीन इंडिया एंड Bangladesh. Economic engagements between India and Bangladesh. So what does it look like? So when we are talking about economic engagements in any relationship, it may mean two things broadly. One is trade relations, another is investments. But in the context of our neighbors or developing countries, we generally talk about development assistance, right? Basically वन इज ट्रेड कंपोनेंट, अनदर इज इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट. जब हम बड़े देशों के बारे में बात करने लगते हैं तो हम एफडीआई के बारे में बात करते हैं कि किस देश से कितना आया, क्यों ये इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पार्टनर है. जब हम छोटे देश की बात करते हैं या अपने नेबर्स की बात करते हैं तो वहां पे वी लुक एट इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म, मेनली इन द फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट
assistance. All right. So what is the story here? What is the story in terms of India-Bangladesh trade? So when you are answering any question pertaining to economic linkages, you need to have certain facts with you. You need to be able to talk about the facts, talk about the pattern in this relationship. Pattern क्या? Pattern का simple मतलब होता है balance of trade क्या है ना? Has the trade grown or has the trade shrunk over the years? So basically, when we look at India-Bangladesh relations, we find certain important factors. One factor is that Bangladesh is India's largest trading partner in South Asia. Largest trading partner in South Asia. All right, so that's a fact. That's generally been true. If you look at the pattern of the last 1 decade, consistently, you would find it is our largest trading partner. And we find that in 2019, the trade had crossed 10 billion US dollars. We also find that largely the BOP, balance of trade, all right, balance of trade remains in favor of India. All right, Bangladesh at best exports around 1 billion US dollars worth of goods to India, and India generally, if you look at that 10 billion figure of that particular year, so 2019 लिख रहा हूँ इसका मतलब पुराना नहीं है, 2019 लिख रहा हूँ इसका मतलब है कि this is the highest figure, right? There is a lot of data available. It is always about the use of data. क्या इस्तेमाल है? तो हम पैटर्न दिखा रहे हैं कि 2019 में trade had crossed 10 billion US dollars. So generally, the balance of trade is in the favor of India. Meaning, what does this mean? This means that in the neighborhood, Bangladesh is an important export market for India. Why is Bangladesh important? As an attractive export market close to our borders. तो अगर हमें मैन्युफैक्चर इन इंडिया करना और फिर एक्सपोर्ट करना है तो बांग्लादेश इज ऑलवेज गोइंग टू बी attractive. If Bangladesh makes economic progress, it would be good for us as well. So balance of trade remains in favor of India. Similarly, India has provided duty-free access to goods, duty-free access to goods from Bangladesh, right? India provides duty-free access to goods from Bangladesh. Why? Because Bangladesh was a least developed country till recently. Bangladesh was in the category of least developed country. So India had extended this courtesy to Bangladesh as part of it being a least developed country and also as part of a trade agreement called SAFTA, South Asian Free Trade Agreement. All right. So both were the reasons why Bangladesh received duty-free access to Indian market. 98% of commodities or goods from Bangladesh received a duty-free access to Indian markets. एक term आया LDC. What is an LDC? What is an LDC? नहीं वो तो मुझे ही पता है. लीस्ट डेवलप्ड कंट्री फुल फॉर्म मुझे ही पता है. यूपीएससी फुल फॉर्म का क्वेश्चन नहीं पूछता है ना? वो वन डे एग्जाम्स या स्टेट एग्जाम में आ जाएगा. बट व्हाट इज एन एलडीसी? क्या मतलब है इस चीज का? A country has per capita income less than $1.9. कैसे हो सकता है ऐसे per capita income $1.9 पर डे की per capita income पर पर्सन पर डे? ये कहां पढ़ा है आपने? और कोई एलडीसी की डेफिनेशन बताएगा? व्हाट इज, हाँ कोई और बोल रहा था, व्हाट इज एन एलडीसी? व्हाट इज एन एलडीसी? मेक अ गेस. लीस्ट डेवलप्ड कंट्री. मैंने कहा था कि हाथ उठा के अब बोलें तो इधर से भी आवाज शुरू हो जाती है, इधर से भी हो जाती है. नाउ आई रियलाइज द डिफिकल्टी ऑफ अ स्पीकर ऑफ द लोकसभा.
हाँ, आप क्या कह रहे थे? ऑफ सोशल, मतलब बाय एंड लार्ज आप सही कह रहे हैं, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप क्या कह रहे थे? Very good. Low income country. So basically understand that the definition of LDC comes from UN, United Nations, Committee on Development Policy within the UN is the body which decides the definition of least developed country. वर्ल्ड बैंक क्या करता है? वर्ल्ड बैंक बात करता है लो इनकम कंट्री, लोअर मिडिल इनकम कंट्री, अपर मिडिल इनकम कंट्री एंड हाई इनकम कंट्री। ये देशों के बारे में कौन बताता है? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक सेज विच कंट्रीज आर लो इनकम कंट्रीज, middle income countries and high income countries. Least developed countries is a category that has been developed by the UN, United Nations, because apart from national income, there are other requirements of these countries. All right, so Committee on Development Policy, United Nations decides which are the least developed countries. So what criteria is it using? 3 criteria. One is the income criteria, meaning GNP per capita, gross national income per capita. All right, gross national product per capita. ये पहला क्राइटेरिया है इनका, इनकम क्राइटेरिया. So of course the LDCs are low income countries. There is no doubt about that. Second criteria is structural impediments to their sustainable growth. So basically idea is that not only these countries are low income countries, but without adequate and specific support being provided to them, they cannot sustain their development. So here you have the human capital criteria. Human capital index is something that the Committee on Development Policy uses. Human capital index. What does this mean? Basically measurement of education, है ना? Education, employment, health of the human resources. So that is basically the second criteria, human capital criteria. And third criteria is any exogenous factors that may impede the economy. So basically this is called economic vulnerability criteria. Economic vulnerability criteria, which means there is an economic vulnerability index that scores these countries developed by the Committee on Development Policy. Economic vulnerability index, what does it mean? How susceptible or vulnerable is the economy to exogenous economic shocks? Shocks which are not necessarily related with economic development. Shocks like, for example, if there is a major natural disaster, can the economy recover? Natural disaster is not an economic factor, it's an exogenous factor. All right. So how vulnerable is the economy to exogenous economic shocks? So that is economic vulnerability criteria. Economic vulnerability index scores these countries, the LDCs, and this is all done by Committee on Development Policy. So basically this committee conducts review of the status of the LDCs. So suppose a country can show that it has achieved double the income criteria in 2 consecutive reviews, it can be considered to be eligible for graduating from the LDC list. मतलब अगर एक देश 2 consecutive reviews में ये दिखा पाए कि उसका इनकम जो है वो डबल है इंक्लूजन थ्रेशोल्ड से, तो इसका मतलब उसका क्लेम है कि अब हम LDC नहीं रह गए, है ना, अब हम पास हो गए, हमारा बैक नहीं लगा हुआ है. Otherwise, a country can come out of the LDC category by showing
progress in at least two of the criteria. At least two of the criterias, a country has to show progress in two consecutive reviews, है ना. तो ट्राई एनुअल रिव्यू होता है, हर 3 साल में रिव्यू होता है ये स्टेटस. सो दिस वाज आल्सो इन न्यूज बिकॉज बांग्लादेश इन 2 लास्ट रिव्यूज हैज फुलफिल्ड द क्राइटेरिया टू ग्रेजुएट फ्रॉम. मतलब अगर जब देश निकलता है एलडीसी की कैटेगरी से उसको क्या कहते हैं, ग्रेजुएशन. ये ग्रेजुएशन होगी भाई, तुमने सारे पेपर पास कर लिए. ऑलराइट, so that is basically what Bangladesh had done. In the last 2 reviews, Bangladesh had fulfilled the requirement to graduate from the list of countries called the LDC countries. So on the one hand, when you are an LDC, generally speaking, you receive favorable treatment in international organizations or in trade arrangements. That is basically how international policies have developed. Generally, it is expected that you would be given some form of support, some form of favorable treatment. One form of favorable treatment is the provision for duty-free access. Many countries provide duty-free access to least developed countries, including India. All right. So on the one hand, that is there. But on the other hand, every country would like to move away from this category. Right? Every country would like to build its economy, become self-sufficient, because you cannot remain dependent on international support. So Bangladesh had shown promise across all these 3 indicators, and that's why last year it was in news that Bangladesh's per capita income has crossed that of India, right? So that is why LDC category was in news. So LDCs are low income countries which with structural impediments to their sustainable development. What is the definition of an LDC? Least developed country का क्या definition है? LDCs are low income countries with structural impediments to their sustainable development. Meaning, low income तो है income criteria, but there are certain structural deficiencies. So LDCs are low income countries with structural impediments to their sustainable development और sustainable economic growth. आप जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि लो इनकम कंट्री फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंडली लो स्कोर ऑन ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स and a low score on economic vulnerability index. And who decides this category, inclusion and graduation from this category? The Committee for Development Policy of the UN. UNDP के अंदर ये वो. So UN के अंदर Committee on Development Policy decides this, and there is a review of the status every 3 years. Triennial review उसको कहते हैं. Every 3 years there is a review of this status. So how can a country graduate from being an LDC? कैसे कोई देश LDC कैटेगरी से बाहर जा सकता है? A, either by showing double the threshold on income criteria, that its per capita income for 2 consecutive reviews was double the income threshold, or in 2 consecutive reviews by showing progress on at least 2 of the indicators. At least 2 of the, या तो किसी भी 2 इंडिकेटर पे एडिक्वेट प्रोग्रेस दिखाना इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में, या फिर इनकम क्राइटेरिया का मतलब क्या है कि आपकी पर कैपिटा इनकम दुगनी है जो ग्रेजुएशन थ्रेशोल्ड तय किया है कमिटी ऑन डेवलपमेंट पॉलिसीज. तो ऐसे आप इससे बाहर निकल सकते हैं. क्यों ये न्यूज में था? Because of graduation of Bangladesh from the least developed country. तो अब साउथ एशिया में there is only one least developed country, which is Maldives. Maldives is a least developed country. All right. Now let's move forward. So जनरली इस तरह के टर्म्स आते हैं, आप अगर पढ़ रहे हैं अखबार, आपका इंटरेस्ट है, आपको अपने आप डेफिनेशन पता चल जाएगी. मोस्टली इन द क्लासेस स्टूडेंट वुड से लो इनकम कंट्री, है ना, या स्टूडेंट वुड टॉक अबाउट एनी वन क्राइटेरिया, बट अल्टीमेटली 3 क्राइटेरिया गो इनटू मेकिंग ऑफ अ लीस्ट डेवलप्ड कंट्री. कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, ये तो हो गई किनारे टेंजेंशियल स्टोरी. द मेन, व्हाट इज द मेन स्टोरी?
We are talking about economic engagements between India and Bangladesh. First part that we are talking about is trade. So we say, if we look at the story, we find this pattern, that one, Bangladesh is India's largest trading partner in South Asia, and the converse is also true. India is Bangladesh's largest trading partner in South Asia. We know that in terms of numbers, the trade has shown impressive growth. So it has grown consistently over the years. So it had crossed 10 billion US dollars in 2019, and we are not talking about 2020-21 because these are not normal years. These are COVID years. इसमें trade नीचे जाएगा ही जाएगा. But when things are normal, trade had grown. We understand that the trade then is in India's favor. Balance of trade remains in India's favor, with around 9 billion US dollars of export. So this also tells us that Bangladesh is an important export market for India in the neighborhood. So that's why again this relationship is important. India has also extended courtesies to Bangladesh. So India has provided duty-free access to exports from Bangladesh into Indian market so far. Why? Because Bangladesh is a least developed country, as well as Bangladesh is part of an agreement called South Asia Free Trade Agreement. All right. So that's why India has extended this courtesy to Bangladesh. Now, what is the scope in this relationship? So we understand that garments are the major exports of Bangladesh to India. Garment is the major export of Bangladesh to the entire world. है ना, जब भी ये यूरोप में फैशन सीजन आता है और वो खूबसूरत ड्रेसेस पहन के आप मॉडलों को देखते हैं, वो कहाँ कौन सिलता है? बांग्लादेश का चाइल्ड लेबर. ऑल राइट, दैट इज एन अनफॉर्चुनेट रियलिटी दैट ये जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, टॉमी हिलफिगर, ये वो, दे अल्टीमेटली देयर प्रॉफिट्स आर अल्टीमेटली बेस्ड ऑन चीप मैन्युफैक्चरिंग. बांग्लादेश के अंदर बहुत सारी टेक्सटाइल फैक्ट्रीज हैं, और अक्सर एक जो चीज न्यूज में रहती है वो क्या रहती है कि कोई टेक्सटाइल फैक्ट्री में आग लग गई, कोई टेक्सटाइल फैक्ट्री जल गई. सो दैट इज द रियलिटी ऑफ द थर्ड वर्ल्ड, दैट human life is expandable here, and the Western world can only talk about human rights etc. But ultimately जब profit कमाने की बात आती है तो क्या देखते हैं सबसे पहले? वो where is the cheap labor, कौन हमारे लिए सस्ता काम करेगा. So garments is the largest export of Bangladesh to international market, as also in this particular trade. Now when we look at the scope, we find that there are either the scope for growth or scope for addressing certain concerns. So one is, according to experts, क्या कहते हैं experts? Experts argue that the potential of trade between India and Bangladesh is 4 times the current level. Is 4 times the current level, meaning that we have made progress, but still that progress is not up to the potential. The potential is 4 times the current level of trade. So that means intervention का scope है यहाँ पे. Second is Bangladesh would like a favorable balance of trade, meaning Bangladesh would be keen to increase its share of exports into Indian market. भारत एक बड़ा बाजार है, हर किसी को ये बाजार चाहिए, right? Any country would be sensitive about its balance of trade. Ideally, countries would like balanced trade, है ना? So why should we, अगर किसी के दिमाग में सवाल आ रहा है, why should we concerned about Bangladesh's sensitivity? First of all, any relationship is a two-way relation, right? Secondly, what is our biggest concern in our trade with China? Trade deficit, है ना? We have run consistently more than 50 billion US dollars of trade deficit with China. So understand that is, if you want to make balanced relations, दोनों side
की बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा. So Bangladesh would like greater market access. And third is soon Bangladesh would graduate from the LDC category. जल्दी ही बांग्लादेश LDC कैटेगरी में नहीं रहेगा. So that means what? That means that so far trade arrangements in the relationship address this factor that Bangladesh is an LDC, so Bangladesh received duty-free access into Indian market. Meaning we would have to think about scenario when Bangladesh would become a developing country. So in those circumstances, what kind of trade arrangement should we have with Bangladesh, right? So तीन concern है. Trade can go up. How to grow or expand the trade? Experts say the level can go 4 times the current levels. Second, we are saying that on both sides there are certain concerns. So Bangladesh as a smaller economy has concerns about balance of trade. So it would like greater access to Indian market. Though 98% of goods receive duty-free access, but there are certain issues. Soon Bangladesh would graduate from the LDC category. So this means that we would have to think about new trade arrangements. Now that's where we move to the other part. Way forward. क्या करना चाहिए इस context में? So क्या करना चाहिए इस context में? First of all, there has to be a focus on infrastructure and connectivity. Infrastructure and connectivity. भाई आप अगर टैरिफ बैरियर नहीं है ट्रेड को तो नॉन टैरिफ बैरियर होगा. नॉन टैरिफ बैरियर मींस इश्यूज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर which basically add to turnaround time, cost of trade बढ़ जाता है. So those kinds of factors, bureaucratic procedures. So ultimately first focus on infrastructure and connectivity, which basically reduces turnaround time and thereby reduces the cost of trade, makes it efficient to trade between the two countries. So that is one solution that people would give. What is the example of that? Creating more ICPs. What are ICPs? Integrated check posts. What are integrated check posts? Armies of both. आर्मी कहां से आ गई इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पे? आर्मी के आगे आप बढ़ ही नहीं पा रहे. रिलेशनशिप में और भी चीजें हैं. हाँ, ट्रेड फैसिलिटेशन वुड बी स्मूदर. सो ICPs, integrated check posts, are facilities where various government departments are located under one roof. So thereby clearances are faster. All right. So the ICPs, integrated check posts, bring under one roof various government agencies and departments like customs, health and sanitation. All right. So basically it's an efficient way of using the border for cross border trade. The purpose is, so suppose एक ट्रक गया बॉर्डर पे, अब वो वहां पे खड़ा है कि पुलिस से क्लियरेंस लेने के लिए उसको 2 किलोमीटर जाना है, फिर उसको कस्टम्स क्लियरेंस लेने के लिए 2 किलोमीटर जाना है, फिर उसको हेल्थ एंड सैनिटेशन क्लियरेंस लेने के लिए 2 किलोमीटर जाना है. तो ऐसे पूरा दिन ट्रक बॉर्डर पे खड़ा रह गया है ना. कभी भी अगर आपने देखा होगा, जनरली आप देखेंगे कि राज्यों की सीमा के बाहर स्टेट्स, डोमेस्टिकली आपने देखा होगा स्टेट बाउंड्रीज पर ट्रक्स खड़े रहते हैं. क्यों खड़े रहते हैं? चेक पोस्ट होते हैं वहां पे, तमाम तरह के फीस देनी होती है, तमाम तरह का इंस्पेक्शन कराना होता है. तो वैसे इंटरनेशनल ट्रेड में तो और भी कॉम्प्लेक्स है. सो द आइडिया इज क्रिएट सच फैसिलिटीज, सच इंफ्रास्ट्रक्चर वेयर गवर्नमेंट फैसिलिटीज आर अंडर वन रूफ टू एक्सपेडाइट टर्न अराउंड time, to expedite clearances, to expedite trade. And generally ICPs are run by an entity called Land Ports Authority of India. Land Ports Authority किसके अंदर आता है? होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है, अंडर दी होम मिनिस्ट्री. ऑलराइट. सो बॉर्डर कंट्रोल का बेसिक टास्क किसके हिस्से में है? ये तो डुअल टास्क है एक तरह से, लेकिन बेसिकली प्राइमरी एजेंसी फॉर
Managing the borders is the Ministry of Home Affairs. All right. So basically ICPs focus on infrastructure and connectivity, which means create linkages for surface transport, build better roads, create linkages for railway transport, create linkages in the inland water transport, है ना? And one example is create ICPs, such facilities on the border which reduce turnaround time, which reduce time taken for clearance. And there are examples of such ICPs which have been opened in recent times. One ICP is Petrapol Benepol. This is the largest ICP. इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट नाम का शब्द आपको क्लास मटेरियल में मिल जाएगा. सो पेट्रापोल बेनापोल इज द लार्जेस्ट, वेस्ट बंगाल बॉर्डर पे है, इज द लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश. पेट्रापोल बेनापोल. और इसके अलावा एक है, बहुत सारे प्लान्ड हैं, कुछ बन रहे हैं, अखौरा अगरतला, है ना? ये त्रिपुरा के बॉर्डर पे, जैसा नाम ही बता रहा है आपको, अखौरा अगरतला आईसीपी. ऑलराइट, अगरतला अखौरा आईसीपी, ये जो है दूसरा इंपॉर्टेंट इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है बॉर्डर पे. सो दिस यू कैन इंक्लूड एज पार्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इन ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर. सो पहला सॉल्यूशन क्या है? इफिशियंसी लाइए ट्रेड में, एड्रेस नॉन टैरिफ बैरियर्स. फॉर एग्जांपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन टैरिफ बैरियर वुड बी इंफ्रास्ट्रक्चर and connectivity impediments, increasing the turnaround time, thereby the cost of trade. दूसरा सॉल्यूशन क्या है और क्या कर सकते हैं टू इंप्रूव द ट्रेड और टू एड्रेस द कंसर्न्स? सो बेसिकली व्हाट वी कैन डू इज प्रमोट programs like border hearts. Border hearts. So basically, to promote trading relations between the communities living on the border, in this relationship you will find provisions for border hearts also. बॉर्डरिंग इलाकों में बाजार लगते हैं जिसमें दोनों साइड के लोग ट्रेड कर सकते हैं. तो पहला तो इट इंक्रीजेस ट्रस्ट बिटवीन टू साइड्स, है ना? ट्रेड टेक्स प्लेस इज ईदर इन इंडियन रूपी और बांग्लादेशी टका. सो लोकल करेंसी में ट्रेड होता है. सो बेसिकली दिस इज अनदर मेजर थ्रू विच क्रॉस बॉर्डर ट्रेड कैन बी increased. Border hearts. Initially 4 border hearts were opened and the scheme is to take the number to 10, right? So 6 border hearts are in various phases of implementation. तो ये border hearts का idea implement कर सकते हैं to add to trade and trade related trust in the bordering areas. तीसरा क्या कर सकते हैं और हम? Focusing on bilateral trade के अलावा focusing on the transit trade between the two countries. मतलब इंडिया और बांग्लादेश को ट्रेड को ट्रांजिट के प्रिज्म से देखना चाहिए. व्हाट डज इट मीन? दैट बांग्लादेश कैन गेन better access to markets of third countries via India, and India can gain better access to markets of third countries via Bangladesh, है ना? उसमें ट्रांजिट फी लगेगी, उससे दोनों को फायदा हो सकता है. बट बोथ ऑफ देम, सिंपल मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे की ज्योग्राफी का इस्तेमाल कर सकते हैं टू प्रमोट ट्रेड विथ थर्ड कंट्रीज, ट्रेड विथ अदर कंट्रीज. ये ट्रांजिट का मतलब होता है दैट ट्रेड इज पासिंग थ्रू अ कंट्री इन इट्स कोर्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. कंट्री ए से सी को ट्रेड जा रहा है, बी से होके जा रहा है. सो बी से होके जो ट्रेड जा रहा है उसको क्या कहेंगे? ट्रांजिट. ट्रेड इज इन ट्रांजिट. तो अगर बांग्लादेश इंडिया की लोकेशन, इंडिया के पोर्ट्स का फायदा उठा पाए तो उसको एक शॉर्टर रूट मिल जाता है रेस्ट ऑफ साउथ एशिया प्लस ऑल्सो वेस्ट एशिया, है ना? इंडिया कैन बी एन इंपॉर्टेंट ट्रांजिट रूट फॉर बांग्लादेशी ट्रेड एंड बांग्लादेश कैन प्रोवाइड ट्रांजिट specifically in the context of, अगर हम समझे, northeastern states to the international market, as well as Bangladesh can be an important transit location in terms of trade with BIMSTEC countries, trade with Southeast Asian countries. So bilateral trade के अलावा ट्रेड को ट्रांजिट के माध्यम से देखना, फोकस करना
would also enhance trade between these countries. All right, and then promoting special visa for the business community. So basically make the movement of business community easier by promoting modalities like special business visas, so that entrepreneurs, businessmen from both sides can take advantage of this. Fifthly, we can say banking linkages, promote banking linkages for better trade finance. All right, so creating better banking linkages, relations between banks across the border, promotion of common standards would help in supporting trade by making trade finance available to exporters and importers. So that is another idea through which we can improve India-Bangladesh trade. And then we can say that India and Bangladesh need to sign a new trade. India and Bangladesh need to sign a new trade agreement. What have we written? India and Bangladesh need to sign a new trade agreement to address the changing scenario. What is the changing scenario? Bangladesh would be graduating from the LDC category. So what we are saying is India and Bangladesh need to sign a new trade agreement to address the changing scenario. So ऐसा है भी, India and Bangladesh are negotiating a free trade agreement. India and Bangladesh are on the path of signing a new trade agreement. ये पिछले 4 साल से चल रहा है. It was first proposed by then Commerce Minister Mr. Suresh Prabhu. Since the circumstances are going to change, we should sign a separate free trade agreement. So अभी वो हुआ नहीं है, तो हम सजेस्ट कर सकते हैं कि एक न्यू एज ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने की जरूरत है, जो भी चेंजेस सर्कमस्टांसेस है उसमें भी फेवरेबल ट्रेड को कंटिन्यू करे. और कुछ ऐड करना है आपको? ऑल्टरनेटिव वे. हाँ, मतलब वो पहला पॉइंट हमने क्या बनाया था? फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी. और एक और क्या पॉइंट बनाया है? ट्रांजिट ट्रेड. तो आप एग्जाम्पल के रूप में इन दो में से किसी एक जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं नॉर्थ ईस्ट के साथ, बट वो पॉइंट हमने बचा के रखा है अगला टॉपिक जो हमारा आने वाला है उसके लिए. क्या है? कनेक्टिविटी के लिए. सो बेसिकली व्हेन यू आर टेलिंग द स्टोरी, दिस इज द स्टोरी यू शुड बी टेलिंग. नेचर ऑफ क्वेश्चन इज ऑलवेज अबाउट टेस्टिंग योर अवेयरनेस ऑफ द करंट सिचुएशन. करंट स्टेटस क्या है, स्टोरी क्या है, पैटर्न क्या है, स्कोप क्या है, क्या संभावना है काम करने की. स्कोप का मतलब ही चैलेंज हो सकता है, स्कोप का मतलब ही लिमिटेशन हो सकता है, फिर उसको सॉल्यूशन देंगे तो वो वे फॉरवर्ड हो गया. सो दैट इज जनरली द नेचर ऑफ यूपीएससी क्वेश्चनिंग यू. वो आपसे यही जानना चाहते हैं कि भाई सबको पता है, सारे लोग ज्ञानी हैं, हमको नॉलेज चाहिए होगी तो हम ले लेंगे कहीं से, भाई एग्जिम बैंक है, इतने नीति आयोग है, आप बस इतना बता दो आपको कितना समझ में आया है. तो हमेशा अपने दिमाग में रादर देन राइटिंग एन एक्सेप्शनल आंसर, ट्राई एंड राइट अ रीडेबल आंसर. इसका मतलब क्या है? एन आंसर विच शुड मेक सेंस टू एनीवन हु इज रीडिंग इट. टेक्निकलिटी भले ही समझ में नहीं आए, लेकिन मोटी मोटी कहानी समझ में आ जाए किसी को भी, जो भी वो उत्तर पढ़ रहा है. तो इसीलिए जल्दी में मत रहो शुरुआत में प्रैक्टिस करते समय. व्हेन यू आर स्टार्टिंग, डोंट बी इन अ हरी. Some people have better command over language. They would find it easier
when they are starting to write answers or to understand things. पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको डिसएडवांटेज है कोई. अगर आप जल्दी में हो शुरुआत से, है ना, जैसे अब एक कॉमन है कि हम मुझे पहले ही अटेम्प्ट पे निकालना है, वो आप चाहते हैं, बट यू डोंट कंट्रोल द एंड रिजल्ट, राइट? यू ओनली कंट्रोल व्हाट? द प्रोसेस. आप एंड रिजल्ट कंट्रोल नहीं करते. तो डोंट बी ऑब्सेस्ड विथ योर एंड गोल कि मुझे पहले ही अटेम्प्ट पे निकालना है. ठीक है, अच्छी बात है, पहले अटेम्प्ट पे निकालना आपका डिजायर है, बट देन व्हेन यू स्टार्ट टू प्रैक्टिस, यू ट्राई एंड बी स्लो. अपने पे इतना प्रेशर मत डालो पहली बार में कि मुझे आज ही आईएएस बन जाना है ना, कि मैं आज क्लास में टीचर मुझे आईएएस बना के भेज देगा. नहीं, इट हैपन्स थ्रू डेज एंड मंथ्स ऑफ प्रैक्टिस. सो अगर आपको लगता है आप कमजोर हैं, आपको लगता है कि कोई लिमिटेशंस आपकी राइटिंग में, तो ओनली वे इज टू राइट, ओनली वे इज टू प्रैक्टिस. और उसके बाद आप और जिनके भी, देखो कि एजुकेशनल बैकग्राउंड का भी एक एडवांटेज होता है ना, बट इस एग्जाम में इस एडवांटेज को नलीफाई किया जा सकता है विथ कंसिस्टेंट वर्क. सो दैट इज बेसिकली ऑल अबाउट मेकिंग सेंस ऑफ एनी टॉपिक और किस तरह से उसको आप स्ट्रक्चर करेंगे. सो हियर इज नाउ योर फेवरेट टाइम, द टाइम फॉर अ break. After the break, we continue with India-Bangladesh relations, try to wrap it up, and then move towards next relation. All right? Bhutan and Nepal. Okay. Hopefully all of you had adequate time to take rest, extend or stretch your limbs. सब कर लिया आप लोगों ने, अपनी दोस्ती जो करनी थी वो कर लिया. माइक इज ऑन. नाउ वी आर बैक इनटू द क्लास. ऑनलाइन शरणवीर का कहना है कि सर पर आंसर टाइम ही इतना कम है कि सोचने का वक्त मुश्किल से मिलता है. तो इसीलिए तो प्रैक्टिस करते हैं, साल भर तैयारी करते हैं. इट इज आइडियली कंसिडर्ड दैट 1.5 years ऑफ प्रिपरेशन is optimal time for a student to write the examination. 1-1.5 साल का प्रिपरेशन चाहिए आपको. 12 to 18 months of preparation is required. जनरली ऐसा कहते हैं. अब एक्सेप्शनल टैलेंट्स के लिए हम नहीं कह सकते. So that is why we prepare ourselves in such a manner by practicing that in the examination there is no duality between thinking and writing. क्योंकि एग्जामिनेशन में सचमुच में मैं सोचूं और फिर मैं लिखूं का टाइम नहीं मिलता अलग से, है ना. प्रैक्टिकली यू हैव 5 minutes टू राइट एन आंसर इन द एग्जामिनेशन. दैट्स व्हाई यू प्रैक्टिस. सो आंसर टू योर क्वेश्चन, आई कैन अंडरस्टैंड द डिफिकल्टी कि टाइम इतना कम मिलता है कि सोचना मुश्किल हो जाता है. सो दैट्स व्हाई यू फर्स्ट यू रीड, राइट, देन यू प्रैक्टिस, देन यू रिपीट. ये प्रोसेस है यूपीएससी का. पहली रीडिंग helps you in identifying what is important, what is the pattern, what is the structure of knowledge in any particular subject. पहली रीडिंग से ये होता है. दूसरी रीडिंग में यू वुड बी एबल टू कंसोलिडेट. पहली रीडिंग में आपने नोट्स बनाए होंगे, हाईलाइट किया होगा, है ना, ऐसा कुछ किया होगा आइडियली. तो दूसरी रीडिंग में आपको वही कंसोलिडेट करने का मौका मिल जाता है. ठीक है, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यू आर अप्लाइंग इट. जो आपने सीखा है उसको कैसे क्वेश्चन के फॉर्मेट में लिखना है वो आप अप्लाई कर रहे हैं. तो जब ये आप बहुत ज्यादा बार करते हैं तो क्या होता है, ये आपका सेकंड नेचर बन जाता है ना. आप प्रॉपर क्लासिकल एस्पिरेंट बन जाते हैं. सोते उठते यूपीएससी एग्जाम के बारे में सोच रहे होते हैं. तो बेसिकली यही करना होता है. इट इज अंडरस्टूड, सबके लिए अंडरस्टूड है कि इन द एग्जामिनेशन हॉल यू आर नॉट गोइंग टू गेट टाइम टू थिंक अलॉट, कि मैं ओरिजिनल थिंकर बन जाता हूं और उसके बाद अपनी एक थ्योरी दे देता हूं. ऐसा नहीं होगा एग्जामिनेशन हॉल में. इसीलिए आप पहले प्रैक्टिस करते रहते हैं, है ना. एंड मेनी टाइम्स मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम दैट स्टूडेंट्स फेस इज कि भाई आंसर तो लिख ले रहा हूं लेकिन पेपर पूरा नहीं हो रहा है. So that gives you a sense. By practice, you enhance your writing speed, but also you create structure for different kinds of answers in your mind. 3-4-5-6 तरीके होते हैं आंसर लिखने के. वो तरीके आप प्रैक्टिस से डेवलप करते हैं, एंड देन इन द एग्जामिनेशन हॉल यू आर डूइंग द सेम. कोई ओरिजिनल आंसर नहीं लिख रहे हैं आप एग्जामिनेशन हॉल में, है ना. यू आर बेसिकली रिप्रोड्यूसिंग व्हाट यू हैव बिकम थ्रू आउट द ईयर बाय प्रैक्टिसिंग. सो सच है, एग्जामिनेशन हॉल में नहीं सोच पाओगे, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी तो सोचने का टाइम है ना. अभी सोचने का टाइम है, अभी सोच सकते हो, अभी आराम से कर सकते हो. आराम से मतलब ये नहीं कि मतलब आज का काम कल करूंगा, नॉट दैट,
कि चलो आज आराम कर लेता हूं, कल काम करूंगा, ये नहीं। बट वेन यू आर राइटिंग यू कैन थिंक, है ना, कैसा लिख रहे हो, क्या लिखना चाहिए। वेन यू आर राइटिंग, वेन यू आर रीडिंग यू कैन थिंक, अभी इस समय। धीरे 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 वो टाइम कम होता जाएगा, राइट। सो जैसा हम कहते हैं ना कि वेन यू आर स्टार्टिंग, यू जनरली वेन यू, फॉर एग्जाम्पल आपको एक मैराथन दौड़ना है, यू हैव टू रन अ मैराथन। तो पहले दिन जान लगा के दौड़ गए और 100 मीटर के बाद जो है सांस उखड़ गई, तो कहने लगे मुझसे नहीं हो पाएगा। तो भाई गलती गोल में नहीं थी, गलती आपके अप्रोच में थी। आपको पहले दिन मैराथन नहीं दौड़ना था। फर्स्ट डे यू बेसिकली कंडीशन योर बॉडी, स्ट्रेच, वार्म अप, थोड़ा दौड़े, थोड़ा चले, और उसके बाद 1-2 महीने प्रैक्टिस की। ऐसा करते हैं ना, पहले दिन। इसी तरह से जब आंसर लिखते हैं या कोई चीज पढ़ रहे होते हैं, तो ये जिद नहीं होती कि मुझे आज ही का आज ही एक्सपर्ट बन जाना है इसका। ए, बेसिक मिनिमम कितना समझ में आया, और बी कितनी कहां पे मुश्किल है, ये समझ में अगर आपको आ रहा है तो अच्छा है ना। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते 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 ग्रेजुअली यू विल ऑल बिकम प्रोफिशिएंट, डिपेंडिंग ऑन कितना समय आप लगाते हैं तैयारी में। चलिए, तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एरिया ऑफ आवर रिलेशंस विद बांग्लादेश, विच इज कनेक्टिविटी। Connectivity. So first of all, let's look at a map. है आपके क्लास मटेरियल में भी एक कनेक्टिविटी का मैप है। वो बेसिकली सिंपली आपको 2-3 चीजें बताने के लिए है, बहुत वो आपको परेशान करने के लिए नहीं है। वो मैप कहीं ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, बट एक विजुअल आइडिया देता है कि व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस, व्हाट इज हाईलाइटिंग। देखो देखो 24 अप्रैल इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल भी है, पढ़ा किसी ने? इंडो बांग्लादेश कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट टू बूस्ट ईस्टर्न इंडिया इकोनॉमी, XMEA सेक्रेटरी, दीज काइंड ऑफ थिंग्स यू कीप ऑन रीडिंग। सो बेसिकली किसी भी रिलेशन में क्या इंपॉर्टेंट है, ये आपको सिंपल गूगल सर्च से पता चल जाता है कि आजकल चल क्या रहा है। ऑलराइट, अभी जरा मैप कोई दिखे तो अब उस मैप को निकाल लेते हैं, है ना। जनरली ये मैप है आपके पास, आपके इसके बगल वाला है, ये वाला, कोई भी मैप हो, जनरली कुछ चीजें ही आपको बताना इसका पर्पस है। क्या पर्पस है, क्या पर्पस है? ये बताना कि भाई जब हम कहते हैं इंडिया बांग्लादेश के बीच में कनेक्टिविटी की बात, तो उसका मतलब क्या है। सो व्हेन यू लुक एट द एरिया ऑफ कनेक्टिविटी, देयर आर फ्यू थिंग्स which should directly come to your mind. Initially we had talked about shared maritime domain in the Bay of Bengal. That Bay of Bengal का पूरा जो region है, it is shared between India and Bangladesh. Not only between India and Bangladesh, but also with other countries. चलो ठीक है। Secondly, we also are contiguous on land. हाँ, land में भी shared borders हैं, ठीक है। And then we have shared rivers. 3 चीजें हैं हमारे पास। One, we are contiguous when it comes to maritime domain, Bay of Bengal शेयर करते हैं। दूसरा, when it comes to land we are contiguous। और तीसरा, we are connected by trans boundary rivers, ठीक है। चौथा हमने समझा था कि this boundary is important because it is contiguous with the sensitive north eastern region, है ना। चौथा हमने समझा था कि बांग्लादेश is also relevant in the context of Act East. It shares a border with Myanmar. इतनी सी चीज आपको समझनी है। So thereby leveraging all these factors, contiguity on land, on sea, है ना, and also the fact that both sides can benefit by trade transit. The idea of connectivity has taken root in this relationship. This is the most ट्रांसफॉर्मेटिव पार्ट ऑफ द रिलेशनशिप, है ना। कुछ लोगों को अखंड भारत बनाना है, कुछ लोगों को रीजनल इंटीग्रेशन कराना है। तरीके अलग अलग हो सकते हैं। जैसे अभी आज मैं पढ़ रहा, न्यूज़पेपर में देख रहा था, तो मिस्टर खट्टर,
the Haryana Chief Minister has given a statement that if East and West Germany can reunify, so can India, Bangladesh and Pakistan. Reunification हो सकता है. Well, that's a political idea. In what ways would it happen? Is it going to happen today? ऐसा तो नहीं है, है ना. एक आइडिया है कि चलो ये आइडिया क्या है, कॉमन लैंड मास है, हम पहले जुड़े हुए रहे, आगे भी जुड़ सकते हैं. अब इसको आप अलग अलग तरीके से बातचीत कर सकते हैं, जो भी है. तो एक तरीका और क्या है, एक तरीका है कि यू हैव बेटर रिलेशंस विथ बांग्लादेश एंड यू क्रिएट इंटरडिपेंडेंस. मतलब ऐसी सिचुएशन जहां पे बांग्लादेश बेनिफिट्स फ्रॉम इट्स रिलेशंस विद इंडिया एंड वी ऑल्सो इन टर्न बेनिफिट फ्रॉम आवर रिलेशंस विथ बांग्लादेश. ऑलराइट, दैट बिकम्स म्यूचुअली बेनिफिशियल relation. So that is at the level of diplomacy, that is the possibility. And at the level of diplomacy, you can't think of a future in which India, Bangladesh and Pakistan would be part of one country. वो politics का part है, right? But we can think of scenarios in which both sides develop adequate interdependence, whereby both sides have a stake in each other's well-being, in each other's development, and that is facilitated by geography as well. So what is happening, if you see in India-Bangladesh relations, is a focus on connectivity project. What kind of connectivity projects? One idea, prominent idea, इस map पे भी दिखता है, is connecting the railway network, Indian railway network with Bangladeshi railway network. It's possible because before 1965 and also in the British era, there was a common railway network. In what today is Pakistan, what today is Bangladesh, common railway network tha. Till 1965, some of these railway alignments were also active. After 1965, it went into the state of disrepair. So by only improving some sections, larger railway connectivity can be established between India and Bangladesh. ऐसा हो सकता है, इसी आइडिया पे काम चल रहा है. तो there is already railway connectivity between Kolkata to Dhaka, Kolkata to Khulna. There is another idea that from Assam, rail connectivity can be created via Bangladesh. All right. And then the idea is that even surface transport based, road based connectivity via Bangladesh can also be created. It would create a shorter route. And then fourth idea is that if you connect rivers, then also seamless connectivity between India and Bangladesh, and also between mainland India and northeastern parts of India can be created. Chautha idea है, the ports of Bangladesh are important in terms of quick access for northeastern states to the open oceans. पांचवा idea है that power, electricity is something that can also be a basis of interdependence. Today, we export electricity to Bangladesh. So, transmission line connectivity, transmission line, grid connectivity is another idea that is quite prominent. What would it do? All of this would create interdependence between India and Bangladesh. Interdependence basically comes from theoretical tradition, liberal theoretical tradition of IR. Interdependence का मतलब यही होता है, creating stakes in each other's development, creating closer cooperation. The idea is that if countries trade more and more, if countries are connected better, then there is less likelihood of conflict because both countries have a stake in each other's development, each other's prosperity. So that is basically the idea that we see right now happening, taking place. If you look at its immediate advantage, you simply can visualize this particular map and see today if somebody from, let's say, Aizawl has to travel to Kolkata, all right, as a travel hub, travel to Kolkata, and then rest of the India, what would be the route? First of all, by road, go to Assam and then cross over Meghalaya and then through the Siliguri corridor, cover the distance to Kolkata. है ना, यहाँ से आप ऊपर गए north, north to east, east to south. If you can create a straight transit path, it would save time. जो आज जिस जर्नी को 48 घंटे लगते हैं, it would take around less than 24 hours or 24 hours.
it would reduce the distance by more than 1,000 kilometers. So basically there are multiple advantages of connecting with Bangladesh. That is what we are saying, that look at the location and realize the potential of this connectivity. कि आप सोच सकते हैं geographic contiguity के कितने फायदे होते हैं. So thereby, first of all, in recent years, you can make a question. You can make a question out of this. Connectivity holds the key. Connectivity holds the key to the future of India-Bangladesh relations. Connectivity holds the key to the future of India-Bangladesh relations. Examine with diverse examples. Examine with diverse examples. अब कोई एक तरीका नहीं है इसका आंसर लिखने का. That is where your ability to think and organize comes. What I am going to tell you is the content to the answer. उस content को आप अपने अपने तरीके से लिख सकते हैं, है ना? So basically the question proposes that connectivity is an important area in India-Bangladesh relations. Full stop. Basically it is telling you that this is what the discussion has been. What do you know about it? Now structure your ideas and present it. ये basically question का intent है. So first of all, if you look at the focus, you can, this kind of a question you can start with those phrases that we have learned. That in recent times India-Bangladesh relations are passing through a golden chapter, right? In this context, there is a visible focus on connectivity projects. मैं simply आपको बता रहा हूँ कि जैसे बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि I'm not able to start, how do I start? So starting can be as simple as that. Identify a phrase or एक jargon और उससे start कर दो that in recent times India-Bangladesh relations are passing through a golden chapter. In this context, there is a visible focus on connectivity projects. All right? ये आपने कह दिया कि connectivity projects पे focus है, बस इससे ज़्यादा introduction नहीं चाहिए, है ना? आपने एक jargon use कर लिया, उसको highlight कर दिया golden chapter. Golden chapter का मतलब ही है कि lot of positivity in the relationship, and thereby you are saying that in this context, in this larger framework, connectivity projects are being focused upon. ये दिख रहा है हमको. तो अब आप अगले उस पर जा सकते हैं. So first of all, what are the factors which are behind this focus on connectivity? Geographic contiguity has the potential to transform the relations. क्या potential है? That it is realized that focusing on connectivity would improve trade and transit, meaning bilaterally speaking in this relationship, if we harness the potential of geographic contiguity, what benefits would be there? A, bilaterally trade and transit would improve. Trade would improve because ultimately connectivity is about infrastructure, connecting one point with the other. That is what connectivity is. So trade and transit would benefit. Similarly, easier access for the states of Northeast, meaning focusing on the potential of geography and transforming it beneficially through connectivity projects has another benefit, that it would provide easier access for the states of Northeast, all right, to mainland India plus to the open seas,
all right, or to the oceans. ये हो सकता है. And then this connectivity can also create better trade with South East Asia, meaning it would strengthen our Act East policy, because ultimately it is about orientation of geography. We are talking about eastern sub-region of South Asia. Eastern sub-region of South Asia is a transit point to the larger Southeast Asian region. So we can say that if we use geographic contiguity, transform it beneficially through connectivity projects, what would happen? Trade and transit would improve automatically bilaterally. There would be better access for the states of Northeast, all right, and also it would help India in other purposes. For example, it would give India better access to Southeast Asia, so it would be beneficial for the purposes of Act East policy also. Generally ये points बना सकते हैं. इसके अलावा there is a World Bank report, है ना, कहीं कहीं पे इस तरह की चीजें भी आपकी मदद करेंगी. That World Bank has come up with a report on connectivity. A World Bank report of 2021 says that both India and Bangladesh stand to gain from enhancing or focusing on connectivity projects. So basically this report says a lot of things. Trade would increase, the real income in both the countries would increase. In Bangladesh, real incomes would increase by 15%. In India, real incomes would increase by 8%. That is what the report is saying. Meaning simply, we are saying that even a World Bank study identifies this potential. All right. So the World Bank report of 2021 argues that both India and Bangladesh stand to gain from enhancing connectivity. One benefit, again, what kind of benefit? These kinds of benefits we are talking about. All right. Another benefit is, as I have said and I am repeating, real incomes can grow up by 8% in India, by 15% in Bangladesh. दोनों को फायदा होगा. So even this can be your starting point, है ना. Introduction अगर आपको लिखना हो, content वही है. Even ये भी introduction में जा सकता है. कैसे? Now you are starting by citing an authority. So you can clearly start by saying that the recent World Bank report argues that India and Bangladesh stand to gain from promoting connectivity, and this has been a focus in the relations in recent times. ऐसे भी शुरू कर सकते हो, है ना. गोल्डन चैप्टर से भी शुरू कर सकते हो, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट से भी शुरू कर सकते हो. कंटेंट वही है, कंटेंट में चीजों को कहां फिट करना है वो उस पर आपको आजादी है. यही प्रैक्टिस से आपको गेन करना है. अदरवाइज एग्जामिनर के लिए नहीं होगा कि हर कोई वही लिख रहा है, हर कोई वही लिख रहा है, तो एग्जामिनर डिफरेंशिएट कैसे करेगा? कंटेंट इज कॉमनली अवेलेबल, योर एप्लीकेशन मेक्स योर आंसर डिफरेंट. कोई टीचर आपका आंसर डिफरेंट नहीं बना सकता. टीचर कैन ओनली पॉइंट आउट व्हाट इज द एडिक्वेट कंटेंट, क्या कंटेंट है, पर आपको किस चीज को कहां पे लिखना है, उसमें अगर आप अपना दिमाग इस्तेमाल करोगे तो अपना आंसर डिफरेंशिएट कर पाओगे. मैंने आपसे क्या कहा, ऐसे भी शुरू कर सकते हो, इस रिपोर्ट से भी, है ना. तो क्या करो, वर्ल्ड बैंक जैसी इंप्रेसिव चीजों को अंडरलाइन कर दो, और गोल्डन चैप्टर से भी शुरू कर सकते हो. पर जाना हमको कहां पे है, कनेक्टिविटी पे. मेन पार्ट वो है. तो हमने बता दिया क्यों कनेक्टिविटी पे फोकस है. एक तो ज्योग्राफी डिक्टेट्स इट, दूसरा result would be beneficial for both sides. It is also attested by external agencies like the World Bank, right? So now either when you are examining, you can make those points as your points of examination, है ना. जैसे सब हेडिंग हम डालते हैं तो ये आपकी सब हेडिंग हो सकती है. It would help in trade and transit. अगर आप ये डिसाइड कर रहे हैं तो यहां पे ये पॉइंट चला जाएगा कि even World Bank says that India and Bangladesh would beneficially benefit from this particular project. All right, easier access for states
ऑफ नॉर्थ ईस्ट। सो इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल देंगे, वो यहाँ पे आ जाएगा, है ना, जैसे रेलवे एक्सेस या पोर्ट बेस्ड एक्सेस, ठीक है। और इसके बाद कुछ एग्जांपल्स यहां पे भी दे सकते हो कि हाँ ऐसा हो सकता है। सो इफ व्हेन यू आर एग्जामिनिंग यू कैन थिंक ऑफ व्हाट इज इट दैट यू आर गोइंग टू मेक द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन। बाकी चीजें क्या हो गई, अब बाकी चीजें इन सारी चीजों का एग्जाम्पल हो गई। सो इन रीसेंट टाइम्स इफ यू सी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, in recent times connectivity projects have included connecting of railways, road transport, waterways, ports and ट्रांसमिशन लाइंस। मतलब ये वाइडेस्ट पॉसिबल कैटेगरी ऑफ एग्जांपल्स है जो आपको मिलेंगे कहां से, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं उनसे, राइट। दीज आर द एग्जांपल्स दैट यू विल फाइंड फ्रॉम द मेजर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स दैट इंडिया एंड बांग्लादेश आर working on. So in recent times connectivity is focusing, so there is a suggestion, Sharar says connectivity include people to people connectivity. Of course you can say that connectivity would also enhance people to people ties. क्यों? by ultimately रोड रेल्स का इस्तेमाल आप लोगों के ट्रांसपोर्ट के लिए भी कर रहे हैं ट्रेड के साथ साथ, तो बिल्कुल वो भी सही पॉइंट है। आई एम टेकिंग योर पॉइंट ऑन बोर्ड। Now, these are the kinds of projects that you will find. What are the major examples of railway projects? तो अब जब आप current affairs पढ़ रहे हो, when you are reading newspapers, you already have some examples in the content. Those are major examples. Those are not going to change. Every year you will find that some or the other project is being inaugurated. So ultimately, when you are reading the newspaper, what you are doing is you are adding to the examples. है ना? You are adding to the examples. So for example, major examples of rail connectivity is between Akhora and Agartala. India has identified that this is one connectivity, बहुत ही छोटा सा distance है, but if this can be upgraded, what would happen? Larger railway transport infrastructure between India and Bangladesh would improve. Akhora Agartala है। इसके अलावा there is another project relevant in the context of Assam, Kulora Shahbazpur. फिर देर आर वेरियस एग्जाम्पल, चिल्हटी हल्दीबाड़ी, चिल्हटी हल्दीबाड़ी, दीज आर वेरियस रेलवे ट्रैक्स विच आर बीइंग लिंक्ड, है ना। इंडिया बेसिकली इस पे पैसे खर्च कर रहा है। अखौरा अगरतला, कोलोरा शाहबाजपुर, चिल्हटी हल्दीबाड़ी, देर आर वेरियस other projects. There is no end to it, but these are the prominent one. जैसे चिल्हटी हल्दीबाड़ी लास्ट ईयर आइडेंटिफाई किया गया था। तो बेसिकली these are the examples that you would see. This would create common railway network between India and Bangladesh. Of course, it would be beneficial for trade. Of course, it would be beneficial for people. But for people, you can already use some of the examples. Already existing railway services कोई है ध्यान में आपके? There are two railway services, passenger railway services that run between India and Bangladesh, Maitri and Bandhan. Maitri and Bandhan, right? Passenger services. These are also part of connectivity. पहला तो रेल लाइन बनाओ, रेल लाइन से रेल नेटवर्क को जोड़ो, तो these are the projects. दूसरा, we already have passenger railway service like Maitri and Bandhan between India and Bangladesh. मिताली जो है वो नया है, करंट आया है ना। हाँ, सो मिताली एक्सप्रेस, चलिए आपने ये भी जोड़ लिया। तो करंट अफेयर्स का यही मतलब होता है, बस रीसेंट एग्जांपल्स आते जाएंगे। स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशन तय है, फंडामेंटल चेंजेस इन रिलेशन बहुत कम होते हैं। क्या एरियाज फोकस के हैं वो तय है पहले से, वही आपको कंटेंट भी बताता है। जो क्लास मटेरियल है जो आप पढ़ रहे हैं, दैट इज व्हाट इट इज टेलिंग यू। सो दैट इज व्हाट यू डू, यू बेसिकली लुक एट द एग्जांपल्स दैट through these
there is an effort to link railway network of India and Bangladesh. What would happen as a result of it? क्या होगा as a result? Better rail connectivity for northeast, है ना? Improve people to people ties through increased passenger traffic, यही होगा. And trade efficiency would be created. So basically example benefits ऐसे करके आप क्या कर रहे हैं? You are examining it, right? And then now let's go to other areas. So this is an area where there are a lot of examples. Road transport, of course, you can talk about bus service between India and Bangladesh. All right, road transport, bus services between India and. Are you aware of any such bus services? बहुत सारी हैं. कोलकाता, ढाका, शिलोंग, ढाका, है ना? तो बहुत सारी बस सर्विसेज अनाउंस होती रहती हैं, राइट? So bus services is another example. Increasing bus services is another example through which we can say that there is a focus on connectivity. Of course, bus services would mean major focus on passenger traffic. So basically it is important in the context of people to people ties. It is basically creating ease for people from move from one point to the other. Now, what are the examples of waterways? So the idea of connecting, as they are called, inland waterways. पढ़ाई होगा आप लोगों ने. How many waterways, national waterways does India have? 111. Okay, all functioning. Okay, what are the major ones? National waterway 1 कहाँ है? गंगा पे. कहां से कहां के बीच में है? प्रयागराज टू हल्दिया. ऑल राइट, ये दिखता है आपको रिलेवेंट. एक छोटा सा गूगल सर्च करोगे तो पता चलेगा. मायर्स नाम की एक लॉजिस्टिक्स कंपनी है, उसने नेशनल वाटरवे 1 का इस्तेमाल करते हुए ट्रांसपोर्ट शुरू किया है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में. कोका कोला के लिए एक ट्रांसशिपमेंट लेकर के गए. So basically the idea is taking advantage of transboundary river, connecting major national waterways with Bangladesh. So for example, the focus is on national waterway 1 and also national waterway 16. नेशनल वाटरवे 2 कहां पे है? नेशनल वाटरवे 16 किस पे है? बराक पे. कुछ साल पहले स्टूडेंट जनरली इस बात का जवाब नहीं देते थे नेशनल वाटरवे 16 कहां है. सो आई एम हैप्पी दैट समबडी इज सेइंग दैट इट इज ऑन बराक. सो बेसिकली दीज आर द काइंड ऑफ रिवर वेज विच देन क्रिएट सीमलेस कनेक्टिविटी बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश. इंडिया करेंटली is in the process of financing dredging of rivers and making them navigable in Bangladesh. अपने पैसे से कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको भी फायदा है ना? हमको भी फायदा है. बांग्लादेश की लोकेशन को अगर हम हार्नेस कर पाए अपने एडवांटेज के लिए तो बहुत अच्छा होगा. So that is why we are supporting these kinds of projects. Basic idea is to connect major waterways. Primary focus is on waterway 1. Second, then you have focus on national waterway 2, national waterway 16. These are relevant national waterways in the context of relations with Bangladesh. So that is what is happening. Now this can support passenger traffic, this can support cargo traffic. And generally it is considered that if you can use waterways, it is cheaper option. All right, cheaper and faster option for transport. है ना? So that is basically what is happening. And then you would see that the idea is to promote transshipment through using waterways, है ना? कुछ हिस्सा आप waterway से ले गए,
फिर उसके बाद there is a port called Ashuganj port. All right. So using ports like Ashuganj port for transshipment is also a related idea. Link national waterways with Bangladeshi water stream, river stream, and then use this for seamless passenger traffic or seamless cargo traffic, and also use Bangladesh's ports like Ashuganj port for ट्रांसशिपमेंट. यानी कुछ दूरी तक आप ले गए वाटरवेज से, उसके बाद आपने क्या किया, वाटरवेज में शिप्स से या बार्जेस से आपने अपना गुड्स निकाला और फिर ट्रक्स का इस्तेमाल करते हुए चले गए. ट्रांसशिपमेंट मतलब मल्टीपल मोडालिटीज यू आर यूजिंग. ऑलराइट, इट इज जस्ट अबाउट क्रिएटिंग efficiency of transport network. So this is something that is happening. The idea of transshipment is also related with the idea of connecting national waterways. और जनरली कुछ भी पढ़ोगे इस बारे में, सिंपल गूगल सर्च करोगे, आपको एग्जांपल्स यही नजर आएंगे. राइट, सो नेशनल वाटरवेज. इसके अलावा इंडिया एंड बांग्लादेश साइंड एन एग्रीमेंट फॉर प्रमोटिंग कोस्टल शिपिंग इन 2016. 2016 में इंडिया बांग्लादेश ने साइन किया agreement to promote coastal shipping, meaning identifying dedicated ports for trade with each other, generally relevant in the context of eastern port, for example the Vishakhapatnam port or the Kolkata port. So point to point connectivity between ports has also been an idea that India and Bangladesh are promoting, signing a coastal shipping agreement. So some examples are of projects, some examples are of agreements. Similarly, in recent times there have been multiple agreements on the use of ports, So in this context we would remember two ports. One is the Chattogram or Chittagong port and another is Mongla port. So these are the two ports which Bangladesh has offered to India for commercial purposes, that Indian ships can use the dedicated services at Chattogram and Mongla ports with Bangladesh. So for this also there exists an agreement signed in 2018, renewed then later on. So in recent times on these two ports there has been an agreement. Right? Now what else is remaining? What other area of cooperation? Coastal shipping. So similarly what you find is India and Bangladesh are focusing on connecting their grids. This is an important idea which again can transform South Asia. Remember, in South Asia some countries are energy rich countries. In South Asia some countries are energy deficient countries. So there is always a possibility of creating a power market, electricity market in South Asia. All right. And this can be done if grids of different countries can be connected. So already you would see the progress is being made. There are grid connectivity between India and Bhutan, India and Bangladesh, India and Nepal. ये grid connectivity आपस में है. Now we can imagine a scenario in the future in which power produced by Nepal can be transferred to Bangladesh via India. Similarly, there are tripartite agreements wherein Bangladesh is now financing hydropower projects in Bhutan and it can buy electricity from Bhutan via India. So that is the larger picture, but you have the Behrampur Bheramara. This is the major transmission line. Behrampur Bheramara transmission line is an example of linkages between power grids of the two countries. So this has added 1000 megawatts of capacity to India-Bangladesh power trade. Alright, India generally exports power to Bangladesh. Around 1600 megawatts of power is something that we are exporting to Bangladesh, and that is being facilitated through
Behrampur, Bheramara transmission line. So basically it benefits power trade between the two countries. Right now Bangladesh is buying electricity from India, and also it helps to facilitate the idea of creating a regional electricity market. All right, it can help in creating a regional electricity market if Amartya Jain says Sadia to Dhubri. सादिया तो धुबरी कौन सी रिवर पे है? तो ये तो आपको इसमें है ही, ऑलरेडी एडेड है सादिया तो धुबरी. तो नेशनल वाटरवे 1, नेशनल वाटरवे 2, नेशनल वाटरवे 16 हमने बात की है. तो ये एग्जांपल यहाँ पे था, उसको भी लेके आ गए. ट्रांसमिशन लाइन भेरामारा बहरामपुर, बेसिकली इट एड्स टू the relation in two senses. One, it benefits the power trade by adding capacity of India selling power to Bangladesh. Secondly, it adds to the idea of in the future creating a regional power or electricity market in South Asia. इसके अलावा एक छोटा एग्जांपल और भी है, पाइपलाइन, पेट्रोलियम पाइपलाइन. India and Bangladesh are also in the process of constructing a petroleum pipeline, basically diesel pipeline. Currently, if you export to Bangladesh, so basically it relies on railway network. Numaligarh refinery in Assam to West Bengal, then to Bangladesh. So there we are constructing a pipeline. The pipeline is between Siliguri in West Bengal and Parbatipur in Bangladesh. So Siliguri, Parbatipur pipeline, petroleum pipeline, is also an example of how connectivity projects are being promoted between India and Bangladesh. So this pipeline would further add to the capacity of petroleum trade between India and Bangladesh. Ultimate idea is create interdependence, all right, cooperation, better cooperation. So names of these kinds of projects, if there are in news cycle, may be a part of preliminary examination question. Prelims examination के अंदर आपसे ऐसे question पूछे जा सकते हैं about locations, right? That's why you look at the locations. Otherwise, in the mains examination, the same thing becomes what? Either a sub point to your answer or an example to any point that you have made in the answer. So same चीज, या तो prelims में it can be a question, and in the mains examination it becomes an example or a category in your answer. So ये इस तरह के कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स इंडिया और बांग्लादेश के बीच में चल रहे हैं. और कुछ छूट गया? There is another project. So India and Bangladesh are in the process of implementing the BBIN Motor Vehicle Agreement 2015. So this is another example going beyond the bilateral, that not only bilateral aspects of connectivity are a focus, but also India-Bangladesh cooperation goes beyond the bilateral to add to the quest of regional connectivity. All right, regional connectivity. So BBIN is an agreement involving Bangladesh, Bhutan, India and Nepal, and the only agreement so far in this relationship is Motor Vehicle Agreement of 2015. Basic idea क्या है? To create common rules, to invest in infrastructure, to promote seamless movement of vehicles, cargo traffic, passenger traffic across the borders. है ना, मैंने एक दिन पहले भी बात की थी शायद, from Bangladesh to India to Bhutan to Nepal, if we can connect. So here we can use this as another added layer of cooperation in connectivity, that not only bilateral but also sub-regional focus on connectivity, sub-regional focus on connectivity. So this is what is happening
in this relationship. Now, can we do something else? So first of all, what is the way forward? Way forward in these kind of cases is timely implementation of projects is important. That if you announce projects, you basically implement them in a timely and efficient fashion. So sometimes you will find that suggestions are going to be common across various relations. So implementation is one suggestion that would always be relevant in the case of India's relations with its neighbors. Neighbors के साथ बातचीत, neighbors के साथ जो भी issue है उसके अंदर implementation is always going to be an important suggestion, specifically about development projects. Similarly, linking regional projects. क्या link कर सकते हैं हम? So for example, if we can focus on linking projects being implemented between India and Bangladesh with the larger BBIN project, BBIN with the Kaladan multimodal project. Kaladan multimodal project कहाँ पे है? म्यांमार में. So if we can create this linkage and also link it with trilateral Asian highway project. Trilateral Asian highway project. ये क्या है? A proposed highway linking Thailand, Myanmar and India. Thailand, Myanmar and India are implementing a highway project linking Thailand with India via Myanmar. Kaladar multimodal project is a project that India is implementing in Myanmar. And BBIN is a project in which both India and Bangladesh are involved. This is being implemented in South Asia. So linking regional projects would also create efficiency of connectivity. If we can link separate projects, ultimately it is in the same geography, so it would be beneficial, linking regional projects. And then lastly, we can benefit by partnering with countries like जापान. नॉर्थ ईस्ट के कॉन्टेक्स्ट में बात करनी हो या इंडिया साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में बात करनी हो, तो जापान इज एन आइडियल पार्टनर. जापान से हमको क्या चाहिए? पैसा. ऑलराइट, इन्वेस्टमेंट्स, टेक्नोलॉजी. And Japan and India have larger political convergence, so they are ready to partner in these kind of projects. So we can always talk about what is the need of the hour, what can be done to improve the effectiveness of these connectivity projects. One, सबसे पहले तो announce किया, उसको implement करो. That is very important that you do it in a timely and efficient fashion. It is about creating India's credibility ना. India के बारे में ये image तो नहीं होनी चाहिए कि India promises and then under delivers. So that is what it is all about. Then linking regional projects. If you want to cover a large geography, there are multiple projects in which India is involved commonly. They can be linked together. So BBIN, Kaladan multimodal project, Trilateral Asian Highway project, if they are interlinked, it creates efficiency in connectivity in a large region. And then India may not have all the resources. So the idea is search for partners, mobilize resources. So partnering with countries like Japan would be beneficial in this context, है ना, in mobilizing resources. Similarly, in the past there has been an idea, है ना, एक छोटा सा एग्जांपल और भी कर सकते हो कि exploring the possibility of India and India, Bangladesh, Myanmar, India, Bangladesh, Myanmar gas pipeline. In the past, it had been proposed. है ना, कुछ experts ने कहा कि there can be a gas pipeline between India and Myanmar via Bangladesh. So explore the possibility of expanding cooperation
that may include exploring the possibility of an India, Bangladesh, Myanmar और India, Myanmar, Bangladesh पाइपलाइन. ये करके हम और भी एम्बिट और स्कोप बढ़ा सकते हैं. किसका? कनेक्टिविटी का. कोई चीज छूट गई? इज देयर एनी क्वेश्चन? भाई जिसको भी कहना हो मुझे कुछ समझ में नहीं आया अभी कहो, ताकि मैं आपसे अगला सवाल पूछ पाऊं कि क्या समझ में नहीं आया. ये दोनों बेस्ट फ्रेंड आपस में बैठ के एक्सचेंज करते रहते अपने व्यूज, कभी कुछ बोलते नहीं है. कोई प्रॉब्लम? कुछ लिखा आपने? कुछ तो बताओ. कुछ पूछना है आपको? क्लास के बाद आके मिलना आप. और किसी को कुछ पूछना है? सो बेसिकली द पर्पज इज टू फिट द इंफॉर्मेशन दैट इज देयर इन अ प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट. सो व्हाट डिड वी टॉक अबाउट राइट नाउ? जल्दी से बताओ. वी फ्रेम्ड अ क्वेश्चन, राइट? दैट क्वेश्चन सिंपली वाज अबाउट इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस, but it is not now about entirety of India Bangladesh relations, but it is about connectivity. इससे पहले हमने एक सवाल और किया था पहले की क्लास में. वो क्या क्वेश्चन था? That India Bangladesh relations are passing through a golden chapter. इसका क्या मतलब है? तो वो क्वेश्चन कैसा हो गया? That is about entirety of the relationship, है ना? Entire relationship. Now this is a question about one important aspect of the relationship. Similarly, there can be a question about economic interactions. So areas of engagement ये तो तय है, जो आजकल हो रहा है, जो पिछले कुछ सालों में हुआ वो तय है. आपको बस जानना है और आपको उसके बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रखनी है ताकि आप आंसर कर पाए. Either there would be question about overall aspect of any relationship or पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ एनी रिलेशनशिप. ओवरऑल एस्पेक्ट ऑफ रिलेशनशिप में आपको सब चीजों का एग्जाम्पल यूज करना है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करनी है, और किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट के बारे में अगर पूछा तो वहां पे भी वही करना है. उस पर्टिकुलर एरिया को समझना है, उसके एग्जाम्पल्स मेजर याद रखने हैं, है ना? प्रॉब्लम्स या स्कोप आइडेंटिफाई करना है. और जनरली क्या होता है कि जब कोई चीज हो रही है, व्हेन प्रोग्रेस इज बीइंग मेड, वी जनरली थिंक ऑफ how it can be made more effective. क्या और कर सकते हैं, क्या और जोड़ सकते हैं. So this is another way of looking at things. Rather than finding problems, we generally say how it can be made better. ठीक है, ये आइडिया था कनेक्टिविटी का, एंड दिस इज बेसिकली एन इंपॉर्टेंट एरिया. सो अब क्या होगा, जब आपने एक बार क्लास में ये सुन लिया टीचर को बोलते हुए, तो आपके दिमाग में ये बात तो आ गई ना. अब अगर आप कुछ भी बांग्लादेश के बारे में पढ़ रहे हैं, सो आपको अपने आप समझ में आएगा कि हाँ ये कनेक्टिविटी का एग्जाम्पल है, हाँ ये इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं. ऐसा होता है? ऐसा हो सकता है ना? होगा ना ऐसा? तो बेसिक बात यही है, इसलिए आप क्लास में आते हैं, इसलिए आप चीजों पे ध्यान देते हैं. बाकी हम जो चीजें लिखनी है वो हम लिख रहे हैं. अगला एरिया क्या है जो हमने आइडेंटिफाई किया था? strategic, other strategic issues. All right, so what is the meaning of strategic issues? है जनरली आप ये टर्म स्ट्रैटेजिक बहुत सुनेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस में, और बड़ा अच्छा भी लगता है स्ट्रैटेजिक, जियो पॉलिटिकल ऐसा कहना, है ना? या क्लास में ऐसे महान और मैकाइंडर, नाम सुना है आपने? महान, मैकाइंडर, हार्टलैंड थ्योरी, रिमलैंड थ्योरी. कोई बात नहीं, सुनना कोई जरूरी नहीं है. ये दो तरह दुनिया को दो देखने के तरीके हैं महान और मैकाइंडर के, हार्टलैंड थ्योरी और रिमलैंड थ्योरी. हार्टलैंड थ्योरी क्या कहता है? हार्टलैंड थ्योरी बेसिकली सिंपली से जमीन जरूरी है, जमीन इंपॉर्टेंट है, कॉन्टिनेंट्स आर इंपॉर्टेंट. रिमलैंड थ्योरी व्हाट डज इट से? ओशंस आर इंपॉर्टेंट. So Heartland theory says that those who control important land mass are going to be important countries, powerful countries, है ना? Rimland theory कहता है कि नहीं, those countries which are going to be important in terms of maritime domain, oceans, naval powers,
they are going to be great powers. जनरल आइडिया, सिंपल आइडिया यही है. सो बेसिकली स्ट्रैटेजिक के कई मतलब हो सकते हैं, है ना. सिंपली डिक्शनरी भी सर्च करोगे तो स्ट्रैटेजी का मतलब समझ में आएगा. स्ट्रैटेजी का क्या मतलब है? एक तो स्ट्रैटेजी का हमेशा मतलब होता है लॉन्ग टर्म. स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव इज अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव. और उसका शॉर्ट टर्म एस्पेक्ट क्या होगा? टैक्टिक्स, है ना. टैक्टिकल एंड स्ट्रैटेजिक. टैक्टिकल क्या है? शॉर्ट टर्म. स्ट्रैटेजिक क्या है? लॉन्ग टर्म. सिंपल मतलब एक ही हो गया. दूसरा मतलब हुआ स्ट्रैटेजिक इज यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिलिट्री इश्यूज, डिफेंस सिक्योरिटी इश्यूज. एक यूसेज वो हो सकता है ना, क्योंकि मिलिट्री लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रही है, लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में बात कर रही है, तो एक मतलब वो हो सकता है मिलिट्री सिक्योरिटी मतलब, है ना. और सिंपल मतलब ये है कोई भी चीज जो सिग्निफिकेंट है इन द लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के लिए जो जरूरी है. जब आप एक वाइडर, मतलब अभी रोज रोज के इश्यूज नहीं देख रहे हैं आप, जब एक वाइडर पिक्चर देख रहे हैं तो कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं. तो तीन तरीके से इस्तेमाल करते हैं स्ट्रैटेजी को. एंड इट ऑलवेज मीन्स अ लॉन्ग टर्म फोकस, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव. इट मीन्स एनीथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम मिलिट्री सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव, ये मतलब हो सकता है. दूसरा, इट मीन्स एनीथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म फ्रॉम द नेशनल इंटरेस्ट, एनी ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट पर्सपेक्टिव, है ना. लंबे समय के लिए जो इंपॉर्टेंट इशू है. So basically, what are the strategic issues that we see between India and Bangladesh? We generally see A, regional concerns, B, bilateral engagements, है ना. अब बाइलैटरल इंगेजमेंट्स को सिंपली हम डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन की तरह देख सकते हैं. सो एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग है दैट व्हेन इट कम्स टू बाइलैटरल सिक्योरिटी एंड डिफेंस इंगेजमेंट्स, इंडिया एंड बांग्लादेश नीड टू वर्क फॉर और वर्क टुवर्ड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट. पहले दिन ये कहा था ना स्कोप में कि कॉम्प्रिहेंसिव डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट होना चाहिए. सो इफ वी सी हियर, डिफेंस रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश आर still developing. So India had provided $500 million of line of credit to Bangladesh for defense procurement. एक तो ये किया इंडिया ने, India has provided some financial support to Bangladesh for purchase of military equipments. All right, एक ये है. उसके अलावा हमने देखा इंडिया एंड बांग्लादेश इंटरैक्शन बिटवीन आर्म्ड फोर्सेस, कॉर्पैट प्लस Sampriti as exercises that bring together the armed forces. Armed forces के बीच में कुछ interaction है, primarily through the example of either naval exercise of Corpat or military exercise of Sampriti. So we see this pattern also happening. We see पिछले हफ्ते कुछ हुआ था इंडिया और बांग्लादेश के बीच में. अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो सिंपली आपको मेंशन आ जाता है. वी सी अ रेगुलर डायलॉग बिटवीन बीएसएफ एंड बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश, बीजीबी. सो द पैरामिलिट्री फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग दी बॉर्डर्स, उनके बीच में डीजी लेवल पे, डायरेक्टर जनरल के लेवल पे रेगुलर डायलॉग है. अभी पिछले हफ्ते ही हुआ डायलॉग बिटवीन बीएसएफ एंड बीजीपी. सो बेसिकली देयर इज, वी सी सम फॉर्म ऑफ इंटरैक्शन, इट इज हैपनिंग. देन वी सी देयर आर सर्टेन कॉमन इश्यूज दैट कॉल्स फॉर क्लोजर कोऑपरेशन. व्हाट आर द कॉमन इश्यूज? सो कॉमन इश्यूज is in the form of combating terrorism and radicalization, right? Combating terrorism and radicalization.
So how do we make a case for this? We simply look at it as an issue that terrorism as a whole affects the interest of South Asian countries. है ना, केवल इंडिया के लिए प्रॉब्लम नहीं है. It affects the interest of both the countries. So for example, in recent times what has happened is there have been developments like Al Qaeda ने अपनी एक फ्रेंचाइज खोली है called Al Qaeda in South Asia. अब उन्होंने कहा कि भाई हम पीछे नहीं, हम यहीं पे हैं, अल कायदा इन साउथ एशिया हम खोलेंगे. इसके अलावा इन रिसेंट टाइम्स इन बांग्लादेश देयर वाज किलिंग ऑफ सेकुलर इंटेलेक्चुअल्स, है ना, पब्लिक फिगर्स. तो बेसिकली उसकी जिम्मेदारी आईसिस ने ली, कहा कि ये तो हमने करवाया है. सो बेसिकली यू वुड सी दैट एज इंडिया फेसेस इंक्रीजिंग टेररिज्म, so does Bangladesh. The actors which are detrimental to India's interests are also going to harm Bangladesh's interests, है ना. Al Qaeda in South Asia, ISIS, ये टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, तो ये इनका एक्सपेंशन हो रहा है साउथ एशिया में. सो एज अ रीजनल इशू टेररिज्म इज एन इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ कोऑपरेशन. व्हाट इज रेडिकलाइजेशन? What is radicalization? ये शब्द आपने सुना होगा. Spread of extremist ideas, यही radicalization है. Spread of extremist ideas. So basically either through social media propaganda or whatever, you basically are radicalizing an individual. उसको आप इतना दुनिया भर के बारे में नेगेटिवली बता दे रहे हैं कि वो तैयार हो जा रहा है किसी को मारने के लिए. Radicalization. So again, radicalization is as much a threat to India as it is to Bangladesh. There are activities of certain groups. For example, there is something called HUJB, Harkatul Jihad-e-Islami Bangladesh. These kind of terrorist organizations are identified as a threat by Bangladeshi government, and similarly in Bangladesh, these kinds of group adopt an anti-India propaganda. So in dealing with terrorism and radicalization, India and Bangladesh can find common threats. For example, expansion of Al Qaeda to South Asia, or the increasing activities of Islamic State, ISIS, in South Asia, or spread of radicalization by groups like HUJB in Bangladesh, which also affects India's interest. So thereby we are saying that this provides a common issue of cooperation between the two sides. We can also say, यहां से एक और इशू ले सकते हैं, going forward the two countries need to think about cooperation in maritime security. Why? Because they share Bay of Bengal, and in Bay of Bengal there are instances of piracy. So issues like piracy affecting shipping in the Bay of Bengal call for closer maritime security cooperation. All right, issues like piracy in Bay of Bengal call for closer maritime security cooperation. So मतलब दो चीजें हमको दिखानी है इस तरह की चीजों में, क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए. लार्जर एजेंडा ऑफ सिक्योरिटी कोऑपरेशन कैसे बिल्ड हो सकता है. तो टेररिज्म एंड रेडिकलाइजेशन, मैरीटाइम सिक्योरिटी आर टू इंपॉर्टेंट एरियाज वेयर focus can be. We can create a wider agenda of cooperation. Similarly, you can think of areas of cooperation like drug trafficking. All right, drug trafficking, human trafficking, cattle trafficking, ये common issues है जो दोनों को deal करना चाहिए. Now, this is basically bilateral engagement. Regional concerns in this context are more from the side of India. So regional concerns include the increasing footprints of China in the Indian subcontinent or in South Asia. So that is basically the larger issue of regional concerns, right? China's increasing presence
in South Asia, right? So 2015-16, Xi Jinping visited Bangladesh. On that occasion, China announced around 24 billion US dollars worth of support to Bangladesh, that it would be providing development assistance worth 24 billion US dollars to Bangladesh. China is also the largest, has emerged as the largest trading partner of Bangladesh, globally, largest trading partner of Bangladesh. ये हुआ है in recent times. Similarly, you would see Bangladesh is the second largest buyer of defense equipments from Bangladesh is the second largest buyer of defense equipments from China. Number one कौन है? Pakistan. Pakistan is the number one buyer of defense equipment from China, but now Bangladesh has emerged as the second largest defense market for China. So basically, in one line, our regional strategic concerns in relation with Bangladesh are focused around China's increasing presence in South Asia. How can we say that there is an increasing presence of China in South Asia? By some examples. So for example, through high-level political visits, like the visit of Xi Jinping to Bangladesh, China has announced significant investments in Bangladesh. 24 billion US dollars of development support to Bangladesh has been announced by China. Number one, ऐसा हम कह सकते हैं. दूसरा हम कह सकते हैं, if you look at recent trend, Bangladesh has emerged, China has emerged as the largest trading partner of Bangladesh. All right. And then we see in terms of defense trade also, Bangladesh's dependence on China is increasing. Bangladesh has become the second largest importer of defense equipments from China. And also you can add to it, Bangladesh has endorsed the BRI. Bangladesh has endorsed the BRI, that it has supported the BRI, Belt and Road Initiative of China, meaning it is interested in attracting infrastructure investment from China. All right. And this is happening because Bangladesh is a least developed country and now it is going to be a developing country. So it is based on its needs, requirements. Bangladesh ko paisa chahiye. All right. Bangladesh requires large investments. Secondly, it is happening because China is aggressively pursuing its ambitions. China has made no bones about the fact that it wants to become a dominant regional power. It wants to dominate Asia and it wants to be a dominant power in global politics also. So second factor why it is happening is China's own aggressive pursuit of its strategy. That is what China is doing. Thirdly, it is happening in the context of, maybe we are saying, China increasing its presence in India's neighborhood to put pressure on India or to marginalize India. So that is why also it is happening, that China would like to marginalize India in its neighborhood. So China is using it as a pressure point. By increasing its presence in the neighborhood, China is putting a challenge to India कि पहले अपने घर को संभाल के दिखाओ. All right. So that is the third point. But why are countries interested in China? Because उनकी अपनी जरूरतें हैं. पैसा चाहिए भाई हमको, चाइना हमको पैसे दे रहा है, हम लेंगे, है ना. वो बाद में क्या होगा वो बाद में पता चलता है, लेकिन पहली जरूरत तो ये है. Every developing country needs significant investment specifically in infrastructure. चाइना के पास पैसा है, चाइना दे रहा है. दूसरा क्या है, चाइना का अपना एम्बिशन है. क्या एम्बिशन है?
First of all, China wants to dominate Asia, and then that is the starting point of China dominating global politics. Right? Only by dominating Asia can China dominate global politics. So that is basically the result of China aggressively pursuing its strategy of dominance. And thirdly, we see, if we want to make a India specific point, increasing its presence in South Asia is a way of putting pressure on India. है ना? Putting pressure on India. हम कहते हैं neighborhood first. So basically China is undermining neighborhood first. अगर हमारा हर neighbor चाइना पे ज्यादा डिपेंडेंट है तो इसका मतलब है कि देयर इज अ लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी, सो एटलीस्ट इट इज पुटिंग अ कंपटीशन. देखो इन्फ्लुएंस भी एक कमोडिटी है. देयर इज कंपटीशन फॉर इन्फ्लुएंस, कौन ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है. ऑलराइट, सो बेसिकली दीज आर द रीजंस दैट वी सी बिहाइंड द रीजनल स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स पर्टेनिंग टू चाइना इन इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस. द चाइना फैक्टर, चाइना क्या कर रहा है बांग्लादेश के अंदर. तो अब सिंपल सा आइडिया है कि इंडिया को क्या करना चाहिए. भाई क्या करना चाहिए, हम बांग्लादेश को ये तो कह नहीं सकते कि तुम जो है चाइना के साथ कोई ट्रेड नहीं करोगे, बिकॉज बांग्लादेश इज अ सोवरन कंट्री, राइट. सो व्हाट कैन वी डू, वी कैन स्ट्रेंथन आवर ओन रोल, आवर ओन रीच टू बांग्लादेश. सो इन चीजों का सॉल्यूशन ही यही है. फर्स्ट ऑफ ऑल, द नीड इज टू साइन अ कॉम्प्रिहेंसिव defense cooperation agreement. So we are suggesting that India and Bangladesh, given the commonality of security challenges, वो भी हमने बात की है, given the commonality of security challenges and shared interests, given the commonality of challenges and shared interest, India and Bangladesh need to sign a comprehensive defense cooperation एग्रीमेंट. पहले तो ये होना चाहिए कि पहले अपना एक फ्रेमवर्क क्रिएट करें डिफेंस कोऑपरेशन का, क्लोजर डिफेंस कोऑपरेशन का. ऑलराइट भाई, मोर नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस, बेटर इंटेलिजेंस शेयरिंग, डायलॉग बिटवीन, जैसा हमने देखा है कि बीएसएफ और बीजीबी के बीच में डायलॉग हो रहा है, तो मोर सच डायलॉग्स, राइट. सिमिलरली डिफेंस ट्रेड, हम बांग्लादेश को क्या प्रोवाइड कर सकते हैं. सो दैट इज बेसिकली required. Exploring the possibility of increased defense exports, increased defense exports to बांग्लादेश. तो पहले अगर आप बांग्लादेश, अगर आप चाइना को डिस्प्लेस करना चाहते हैं तो पहले आपको क्या करना चाहिए, खुद पहले तो डिफेंस इंडिजनाइजेशन हो, हम प्रोड्यूस करना शुरू करें. जब अपनी जरूरतों के लिए करेंगे तो हम सेल भी कर पाएंगे, तो हम भाई कम कीमत पे भी दे पाएंगे. ऑलराइट, सो बेसिकली एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीज डिफेंस एक्सपोर्ट्स टू बांग्लादेश. जनरली इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैज बीन इंक्रीजिंग, ऐसा हमको प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बताया है ना. रिसेंटली अगर आपने कुछ स्पीचेस उनकी देखी हो, भी कुछ दिन पहले अखबार अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये तो देखा ही होगा आपने, है ना. सो बेसिकली दैट कैन ऐड टू इंडियाज कैपेबिलिटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग रिलेशंस विद अदर कंट्रीज ऑल्सो. सो ये हमको करना है एक्सप्लोर. इसके अलावा हमको क्या करना है, इसके अलावा हमको क्या करना है, बाकी फैक्टर्स भी इसमें आ जाते हैं ना. बेसिक बात है कि बांग्लादेश के साथ रिलेशंस को इंप्रूव करना है. सो बेसिकली फोकसिंग ऑन ट्रेड, फोकसिंग ऑन कनेक्टिविटी, टाइमली इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स. जो और सजेशंस हैं वो भी यहां पे वैलिड है ना, बिकॉज इट इज अल्टीमेटली अबाउट इंडियाज क्रेडिबिलिटी, दैट इफ यू आर कंपीटिंग विद चाइना फॉर इन्फ्लुएंस इन बांग्लादेश, देन इट इज ऑल अबाउट क्रेडिबिलिटी. आपको ये लव ट्रायंगल अगर है तो जीतेगा वही जो ज्यादा क्रेडिबल नजर आएगा. इन्फ्लुएंस के लिए लड़ाई हो रही है तो फिर आपको जिसको आप इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं उसकी जरूरतें पूरी करनी होंगी, है ना. सिंपल बात है. बांग्लादेश इज अ लीस्ट डेवलप्ड कंट्री. बांग्लादेश के हिसाब से सोचो भाई, क्यों वो ऐसे प्रतिष्ठा में प्राण गंवाए बांग्लादेश कि भाई हम इंडिया के दोस्त हैं इसलिए हम चाइना से
दोस्ती नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमको ज्यादा ये इंश्योर करने की जरूरत है ना कि बांग्लादेश थिंक्स ऑफ इंडिया एज अ बेस्ट फ्रेंड। चाइना के पास ऐसा क्या है? सो बेसिकली एज वी हैड अर्लियर ऑल्सो सेड, लीवरेज द एस्पेक्ट्स ऑफ जियोग्राफी एंड कल्चर। जियोग्राफी एंड कल्चर का क्या मतलब है? लीवरेज द एस्पेक्ट्स ऑफ जियोग्राफी एंड कल्चर। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इफ यू लुक एट मेनी ऑफ आर नेबर्स, बांग्लादेश फॉर एग्जाम्पल डज नॉट शेयर अ बॉर्डर विद चाइना, वी डू शेयर अ बॉर्डर विद चाइना। तो इसका मतलब क्या है? लीवरेजिंग जियोग्राफी का क्या मतलब है? वही मतलब है जो हमने पहले देखा है, भाई जल्दी से रेलवे नेटवर्क कनेक्ट करो, जल्दी से वाटरवेज को कनेक्ट करो, जल्दी से रोड नेटवर्क को कनेक्ट करो, ताकि there is greater interdependence between India and Bangladesh which cannot be displaced by China. China इस चीज का मुकाबला नहीं कर पाता। चाइना ज्योग्राफी तो चेंज नहीं कर सकता ना। China does not share a border with Bangladesh, we do. So if we are able to better integrate Bangladesh into India's larger growth process, we would be able to displace China as an option. ऐसा हो सकता है ना? And what is culture? Bangladeshi people don't speak Mandarin, they speak Bangla. Bangla is among the most important languages in terms of number of people speaking it. Otherwise all the languages are equally important. they are है ना? मैं जो बोलता हूं वही मेरे लिए important है. So in terms of the number of people speaking it, Bangla is already an important language in India. So leveraging that, what else can we leverage? Commemorating certain common historical milestones. For example, 50 years of Bangladesh's liberation, or identifying the contribution of India to Bangladesh's liberation. है ना? तो अभी आपने देखा होगा, many of the military officials were honored by Bangladesh. है ना? जैसे वहां पे मुक्ति वाहिनी थी, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के सपोर्ट को क्या कहा जाता था? Mukti Jodhas. Mukti Jodhas. All right. So commemorating those kind of, leveraging those kinds of factors, commemorating common historical milestones, promoting better people to people ties. For example, tourism is one way, promoting health tourism, issuing more number of visas. We already issue largest number of visa to people from Bangladesh. Promoting scholarship for students of Bangladesh in Indian universities. These are ways of leveraging culture and geography. All right. किसी को ये पॉइंट समझने में दिक्कत तो नहीं आ रही है ना? ये भी एक कॉमन पॉइंट है जो आप बहुत सारे नेबर्स के साथ इस्तेमाल करना है. इंडिया को क्या करना चाहिए? लीवरेज द फैक्टर्स फेवरेबल टू इट, जियोग्राफी एंड कल्चर. श्रीलंका के केस में भी वही है, चाइना इज फार अवे, है ना? मॉलडीव्स के केस में भी वही है, चाइना इज फार अवे. सो लीवरेज जियोग्राफी एंड कल्चर. केवल जियोग्राफी के होने से नहीं होता, आपको इन द केस ऑफ Maldives you have to have more number of ferry services, more number of flights. In case of Bangladesh, better road connectivity, better train connectivity. ऐसा ही आप नेपाल के साथ भी कह सकते हैं. So basically this is the larger idea, and ultimately keeping an eye on issues of importance. For example, जो क्लास मटेरियल के अंत में आपको क्या बताया जा रहा है कि किस चीज पे आपको नजर रखनी है. 1. India Bangladesh Ganges Water Agreement is going to expire in 2026. So we must be ready. We should be ready for a new agreement. दूसरा क्या है? Persistent issues on water would remain. So we need to find an adequate framework for managing water issue, water sharing और other river issues. ये persistent issue रहने वाला है. For example, एक issue mentioned है तिपाई मुख. देखा है आपने? तिपाई मुख. Where is तिपाई मुख? In the state of Manipur on the Barak river. So when this project was started, Bangladesh had raised objections to it. ये अलग बात है कि ये अपने आप में जो तिपाई मुख प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट होता रहा. All right. So तिपाई मुख project is still not complete right now because of environmental reasons. But we have to understand that these kind of sensitivities would be there. Bangladesh is a lower riparian.
So river water issues would always be important. We need to find an adequate framework for managing the differences and also framework for sharing of the resources. ये हमेशा जरूरी होगा. इसके अलावा क्या issue है? Immigration. All right. So yesterday somebody was asking if we, in the last class, if we issue large number of visas to people from Bangladesh, क्यों illegal immigration है? So generally understand, इस पे कोई question UPSC नहीं पूछता कभी, because majorly this is a domestic issue. But if you see, generally, if you want to understand immigration, it happens because of push factor, it happens because of pull factors. All right. Similarly, it can be legal or it can be illegal. दोनों ही तरीके से हो सकता है. All right. So when you look at the legal migration, it is a strength to the relationship. Basically, legal migration strengthens people to people ties, creates familiarity between two countries. In other words, it can be seen as a part of soft power. ज्यादा लोग आना चाहते हैं हमारे देश में, तो अच्छी बात है, ये तो है ना. अच्छी बात है या बुरी बात है? बुरी बात है. ज्यादा लोग हमारे देश में आना चाहते हैं, ये बुरी बात है. अधिकतर लोग अमेरिका जाना चाहते हैं, बुरी बात है. भाई अमेरिका में कुछ तो दिखता होगा उनको, तभी तो जाना चाहते हैं अमेरिका. उसी तरह से अगर इंडिया भी सीन एज एन अट्रैक्टिव कंट्री, तो आपको क्या प्रॉब्लम है उसमें? चलिए वो आप अपनी राय रख सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जैसे चीजों को समझ रहे हैं. बट जनरली सी लीगल इमिग्रेशन, इफ वी आर इशूइंग मोर नंबर ऑफ वीजाज, मोर पेशेंट्स आर कमिंग, मोर टूरिस्ट आर कमिंग, मोर बिजनेस पीपल आर कमिंग, तो आके कुछ पैसा ही खर्च कर रहे हैं ना यहाँ पे. दूसरा, एक इमेज लेके जा रहे हैं इंडिया की एज अ केपेबल कंट्री. यहां रह नहीं जा रहे. इमिग्रेशन का मतलब ये नहीं कि परमानेंटली यहाँ पे सिटीजन बन जा रहे हैं, कुछ समय के लिए आए हैं, है ना. वीजाज आर बीइंग इशूड, यू कैन ट्रैक देम, यू कैन डिपोर्ट देम. अच्छा है कि लीगली लोग आए, आप उनको ट्रैक कर सकते हैं, आप उनको डिपोर्ट कर सकते हैं, आप उनको. तो बेसिकली लीगल इमिग्रेशन strengthens people to people ties, strengthens the image of India. Illegal immigration creates social issues, creates security concerns. In what ways it creates social issues? So illegal immigration हो रहा है, तो ये तो मान के चलो कि यार बंदा रहने के लिए आ रहा है ना. So basically it creates social issues in the sense of issues of identity, issues of assimilation, right? So for example, why are people in Assam concerned about illegal immigration? Because they are saying that in one way it is affecting the interests of the local people, right? Employment opportunities, right? Or it is affecting social relations. So that is basically the issues which are created by illegal immigration. Strain on local economy. भाई वो कहेगा कि भाई हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इलीगली आया हुआ बंदा ले जा रहा है. सो बेसिकली वेरियस सोशल इश्यूज, issues of cohesion, issues of integration, pressure on local resources, economic issues in terms of competition in employment, these are all attributed to illegal immigration. Security concerns. Illegal migrants are difficult to track. So given the extent of radicalization or threat of radicalization in the neighborhood, it is understood that some of the illegal migrant may be susceptible to radicalization, all right, and thereby may pose internal security challenges, be that as it may. चलिए ये हो गया. Push factor meaning the immigration is happening because either there are problems in Bangladesh or Bangladesh is deliberately pushing them into India. Pull factor is because India is more attractive. India has better economic opportunities. All right. So it is happening because of pull factor.
howsoever it is happening, first of all, the need is to see better regulate legal immigration, right? Because that is beneficial. In order to combat illegal immigration, it cannot be done without the cooperation of Bangladesh. So bilateral cooperation is required. In what ways bilateral cooperation can take place, right? So it can be done through issuing work permits, all right, and incentives for registration, and it can also be done through implementation of NRC as जो हुआ है उसको तो आपको शामिल करना ही पड़ेगा. डोमेस्टिकली हम क्या कर रहे हैं? We have created a NRC, most importantly in this particular context. So ऐसे आप कर सकते हैं. So what is the meaning of this? Bilateral cooperation. So generally if you see the debate in India, the solution to illegal immigration is said to be triple D, which is what? ये पहला D क्या है? Detect. Detect the illegal immigrants. दूसरा क्या है? Delete. Those from Assam or northeastern states may be able to understand it better. Delete. What is delete? Delete the names of illegal immigrants from the electoral rolls, all right, or voter list. And then third D is what? Deport. Third D is deport. कहां डिपोर्ट करेंगे सर? बे ऑफ बंगाल. तो यहीं पे आके मामला अटक जाता है. देखो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में तो बहुत सारी बातें हो रही हैं, है ना, बहुत सारी बातें हो रही है. बट इन द सुप्रीम कोर्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज लैक ऑफ क्लैरिटी ऑन नंबर्स. हाउ मेनी इलीगल इमिग्रेंट्स आर देयर? नोबडी नोज. सक्सेसिव गवर्नमेंट्स इन इंडिया डोंट नो. एनआरसी हमने किया तो क्या हुआ? उस पे अपने आप में विवाद हो गया कि भाई कितना सही है कितना गलत है. कई जो लोग सचमुच में सिटीजन्स थे उनको भेज दिया कैंप्स में. नंबर बहुत ज्यादा नहीं आए. तीसरा, अगर हमने आइडेंटिफाई कर भी लिया, लीगल प्रोसेस पूरा भी हो गया, इट इज नेसेसरी, सीरियस इशू, सीरियसली लेना चाहिए. डिपोर्ट कहां करेंगे? तो बांग्लादेश के मिनिस्टर ने कहा कि इफ इट इज प्रूवन कि दीज पीपल आर फ्रॉम बांग्लादेश, वी आर रेडी टू टेक देम बैक. आपको प्रूव करना पड़ेगा, है ना, जो कि सबसे मुश्किल काम है ना, सबसे मुश्किल काम यही है. तो बेसिक बात यह है कि चाहे आपको लीगल माइग्रेशन को मैनेज करना हो, इलीगल माइग्रेशन को कॉम्बैट करना हो, आपको पहले लेवल पे क्या चाहिए? कोऑपरेशन फ्रॉम बांग्लादेश. That generally happens through various meetings. For example, there is a meeting between home ministers. So home ministry keeps on raising this particular issue. External affairs minister ने क्या कहा? External affairs minister was in Bangladesh. He was asked this question: is the issue of NRC or CAA or illegal immigration going to affect India-Bangladesh relation? He said, no, these are domestic issues of India. ये Ministry of External Affairs का कहना है. अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं? Generally, my idea is that most of the immigration, if it is happening illegally, it is happening because of pull factors. That India is relatively better economically as compared to Bangladesh. So many people want to come to India in search of better opportunities. And यहाँ आसपास में दिल्ली NCR में there are a lot of domestic workers, Bengali speaking domestic workers. Many people say that they may be from Bangladesh, right? Northeastern states के अंदर cheap labor is provided by this illegal immigration. Illegal immigration को कई लोग इसलिए प्रमोट करते हैं कि illegal migrants are ready to work on low wages, है ना. जैसे जब इंडियंस जाते हैं अमेरिका और वहां कैलिफोर्निया में खेती में काम करते हैं, तो या मैक्सिकन जब जाते हैं, क्यों अट्रैक्टिव है वो? क्योंकि वो कम पैसों में काम करते हैं. सो ऐसा भी कई लोग कहते हैं कि भाई इन नॉर्थ ईस्ट मेनी टाइम्स इलीगल इमिग्रेंट्स आर प्रेफर्ड एज वर्कर्स बिकॉज ऑफ चीप लेबर. देयर कैन बी वेरियस फैक्टर्स, बट अल्टीमेटली
if you cannot outrightly deal with anything, you need to find ways of first of all making it apparent. पहले आपको ये उसको क्वांटिफिएबल बनाना होगा. क्वांटिफिएबल बनाने का तरीका क्या है? Issue work permits. Okay, if you want to come to India, register yourself and we will issue you work permits. इससे क्या हो रहा है? At least you have the numbers. At least you have the clear picture, right? That you can manage, right? So work permit. अगर ऐसा कंसिडरेशन है कि पुल फैक्टर की वजह से आ रहे हैं, राइट, लेबर मार्केट कंडीशंस की वजह से आ रहे हैं, ढूंढना पड़ेगा हमको कारण. सो वर्क परमिट देने से क्या होगा? आप कम से कम इस नंबर की जानकारी रख सकते हैं. इंसेंटिव्स फॉर रजिस्ट्रेशन, मीनिंग वन वे कैन बी encourage people who may have illegally crossed over into India. उनको ऐसा मत कहो कि विलन ही है. हो सकता है भाई ऐसा मानो ना कि अनपढ़ है ना, इलिटरेट अनस्किल्ड बंदा है, उसको पता नहीं होगा, उसको किसी ने इनकरेज किया होगा, इंडिया आ गया. तो नाउ इंसेंटिवाइज रजिस्ट्रेशन कि भाई कम फॉरवर्ड, आपको इतने महीने का समय दे रहे हैं, कम फॉरवर्ड एंड रजिस्टर योरसेल्फ, है ना. कई बार ज्यादा शोर मचाने से भी काम नहीं होता. सो इंसेंटिवाइज रजिस्ट्रेशन इज व्हाट आई एम सेइंग. एंड ऑफ कोर्स wherever such instruments are required, NRC or better border management, do it. Ultimately stop the people from illegally entering into India at the borders, है ना. लेकिन थोड़ा करप्शन तो वहां पे भी होता है, थोड़ा करप्शन तो बॉर्डर्स पे भी होता है ना. सो जो भी जहां पे भी ऑफिशियल्स हैं, अगर वो अपना काम कर रहे होते तो शायद ये इशू नहीं बनता. तो एक लेवल पे तो हमको अपना परफॉर्मेंस भी ठीक करने की जरूरत है ना. बेटर लॉ इन्फोर्समेंट, बेटर बॉर्डर मैनेजमेंट, राइट. अब अगर कोई इशू है तो सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा? क्वांटिफिएबल बनाना पड़ेगा. आपको नंबर्स लाने होंगे, आपको आइडेंटिफाई करना होगा. उसका तरीका क्या है? डायलॉग विद बांग्लादेश, बायलैटरल कोऑपरेशन. देन think of issuing work permits if the migration is happening because of pull factors, labor market conditions, and incentivize registration, right? Give opportunity to those who have illegally migrated to India to register so that you can legalize their status. And then there are instruments like National Register of Citizens. So all I am saying is, first of all, when it comes to issues of immigration, they are raised at the level of Home Ministry dialogue. Generally, India has not sought to make it an issue of contention in its relations with Bangladesh. But illegal migration definitely is a sensitive political issue in India, specifically in states like Assam. So it has to be dealt with. How can you deal with it? You look at immigration in its entirety. Either it is legal or illegal, right? So if it is legal, generally it is strengthening people-to-people ties. It is creating familiarity, it is creating better image from India. If it is illegal, it may create social issues. So it is a sensitive issue in northeastern parts of India because of concerns of local community, of their culture, as well as employment opportunities. It may create security concerns because of the possibility of radicalization and anti-social elements utilizing the immigrants to harm India's interests. Immigration happens because of push factor or pull factor, right? Push factor means either there is policy existing on the other side to promote illegal immigration to India. We cannot say that. Every time we ask Bangladesh about this, they would say that we are not promoting illegal immigration. You prove that the other person is a Bangladeshi, right? So basically it becomes an issue of self-respect, that how can you accuse of illegal immigration? All right. So push factor not so much, but pull factor. Push factor earlier, when Pakistan, West Pakistan had adopted discriminatory policies or suppressive policies against the population of East Bengal. All right. Sometimes religious violence may also be a push factor, but generally it can be also seen as a result of pull factor, that there is widespread poverty in Bangladesh. So thereby many unskilled workers look at India as providing opportunities of employment. तभी तो आप देखोगे कहां बांग्लादेशी काम कर रहे हैं, आपको दिखते हैं.
मैनुअल लेबर, ऑलराइट, डोमेस्टिक वर्कफोर्स, यहां कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं बनने आया है, आप बनने भी नहीं देंगे, ऑलराइट। सो जनरली यू आर लुकिंग एट देम इन दी वर्कफोर्स, अगर ऐसा आप अंदाजा लगा रहे हैं तो फिर आपको क्या करना है, बायलैटरल कोऑपरेशन विद बांग्लादेश। वन, टू रेज द इशू एट द करेक्ट प्लेटफॉर्म इज ऑलवेज नेसेसरी। आप उसको, डोंट वॉश योर डर्टी लिनेन इन पब्लिक, अगर कोई मुद्दा है भी गंभीर तो उसको आप एडिक्वेट लेवल पे एड्रेस करें, होम मिनिस्ट्री के लेवल पे, इलेक्शन के लेवल पे सॉल्व नहीं कर सकते आप इलेक्शन रैलीज में, ऑलराइट। सेकेंडली, व्हाट इज रिक्वायर्ड, व्हाट वुड कोऑपरेशन मीन? सो इफ बांग्लादेश ग्रोज इकोनॉमिकली, if we can assist Bangladesh in capacity building, it would mean that those who are coming to India because of pull factors may not have the reason to come to India. They would find employment opportunities in Bangladesh. ऐसे भी सोच सकते हैं। डोमेस्टिकली अगर ये इशू हमको देखना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज द प्रॉब्लम ऑफ नंबर्स, है ना, एस्टिमेट्स हैं बट एग्जैक्ट नंबर किसी के पास नहीं है, ऑलराइट। सुप्रीम कोर्ट में भी केस चला, नंबर मांगा गया, अंदाज है, एग्जैक्ट नंबर नहीं है, राइट। सो दैट्स वेयर वी नीड टू थिंक अबाउट रेगुलेटिंग इट, राइट। सो वी मे थिंक ऑफ इशूइंग वर्क परमिट्स फॉर लेट्स से मैनुअल लेबर। जैसे इंडिया से इमिग्रेशन हुआ, गल्फ कंट्रीज की तरफ काम करने के लिए लोग गए, तो एक रेगुलेट करने का तरीका है वर्क परमिट्स इशू करे कि भाई लीगल तरीका है आने का, अगर आपको आना ही है कुछ काम करने के लिए, मैनुअल लेबर करने के लिए, तो इस विंडो से आओ, है ना। इससे क्या होगा, हमारे पास कम से कम नंबर्स होंगे। दूसरा क्या है, दूसरा क्या करना चाहिए हमको, इंसेंटिवाइज रजिस्ट्रेशन। लॉन्ग शॉट है, ऐसा जरूरी नहीं कि हो जाए, लेकिन आप इंसेंटिव अनाउंस करो। कई बार होता है ना कि टैक्स इंसेंटिव आप अनाउंस करते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि वॉलंटरी डिस्क्लोजर ऑफ इनकम स्कीम, कि भाई तुमने जो है डिक्लेयर्ड सोर्सेस ऑफ इनकम से ज्यादा असेट इकट्ठा कर लिया है, आओ तुमको एक मौका देते हैं, फाइन भरो और अपनी इनकम को लीगल बना लो। ऐसा भी हुआ है इंडियन इकोनॉमी के अंदर। 1996 के बजट में वॉलंटरी डिस्क्लोजर ऑफ इनकम स्कीम नाम की एक चीज आई थी, है ना। लोगों ने इलीगली इनकम तो कर ली, लेकिन अब सरकार ने क्या तरीका निकाला उसका, कि वन टाइम अपॉर्चुनिटी है आपके पास, अपने को डिक्लेयर करो, थोड़ा फाइन करो और मामले को सॉल्व कर लो। तो वैसे ही एक बात हम कह रहे हैं, इंसेंटिवाइज रजिस्ट्रेशन। इफ देर इज अ कंसर्न दैट देर मे बी इलीगल इमिग्रेंट्स, देन अनाउंस अ स्कीम ऑफ रजिस्ट्रेशन। होगा नहीं होगा ये नहीं कह रहे हम, डोमेस्टिक लेवल पे ये कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स देयर आर एक्सरसाइजेज लाइक एनआरसी, ये हमको करने की जरूरत है, एडिक्वेट बॉर्डर मैनेजमेंट करने की जरूरत है, और ऐसे हम इस इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं। अब देखो यहां पे आज की क्लास खत्म करते हैं। Thank you very much. We will meet in the next class and we will talk mainly about Nepal and Bhutan.